Good evening to everyone. The second ODI between Pakistan and Sri Lanka at Rawalpindi Cricket Stadium is underway, and Pakistan has won the toss and decided to bowl first. Surprising changes that Shaheen Afridi is out sick. So the captain's call. इसके ऊपर बड़ी बात करनी है कि who should have been the replacement of Shaheen Afridi. We all know यहाँ विकेट हो गई है। पहले मैं आपको स्कोर की थोड़ी सी अपडेट देता हूँ कि क्या करंट अपडेट है। अभी अबरार अहमद हैज़ बीन ब्रॉट इनटू द अटैक और तीसरे ओवर की उनकी पहली गेंद के ऊपर जो बैट्समैन है मिशेरा आउट हो गए हैं। 62 फॉर 2 हैं करंटली। 13.1 overs have been passed and श्रीलंका इज प्रीटी प्लेइंग गुड क्रिकेट और इस विकेट से पहले पहले तक दे वर इन द कमांडिंग पोजीशन बट नाउ आफ्टर अब्रार्स विकेट थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। तो खैर मैच की अपडेट्स तो मैं आपको साथ साथ प्रोवाइड करता रहूँगा वक्तन फ़वक्तन और स्कोर का साथ साथ अपडेट दूंगा। बट आई थिंक द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ ओवरऑल साथ का जो न्यूज़ है उसके ऊपर भी बात करनी है। फर्स्टली द कैप्टन थिंग, क्योंकि पहले प्लेइंग 11 में आपको लोगों को बताता हूँ पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है। टू चेंजेस हैव बीन मेड इनटू द साइड। फर्स्ट शाहीन अफरीदी हैज़ बीन आउट। वो उनकी जो न्यूज़ आई है दैट ही इज़ बीन कॉल्ड एज सिक। उनको कोई फ्लू वगैरह हो गया। रावलपिंडी का क्लाइमेट भी थोड़ा सवेयर होता जा रहा है। आई वाज इन इस्लामाबाद लास्ट नाइट एंड केम होम अराउंड 1 in the morning और उस टाइम काफ़ी ठंड थी। ज़ाहिर है सुबह सुबह मतलब रात के 1 बजे कह लें आप कि काफ़ी ठंड थी। तो इस्लामाबाद का तो ये मौसम है और ज़ाहिर है फ्लू हो गया शाहीन अफरीदी को। इसके ऊपर बात होगी और दो चेंजेस हैं और एक तो ये और दूसरा फ़हीम अशरफ हैज़ बीन ड्रॉप्ड। दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग न्यूज़ फॉर मी बिकॉज आई कुडंट इमेजिन कि फ़हीम अशरफ को आप प्लेइंग 11 से ड्रॉप करेंगे। बट ही इज़ अ सीजनल गाय राइट, इज़ अ प्रो पर्सन। तो अगर उसको जिस तरह शाहीन को अगर आप निकालते हो तो उसके कम बैक के ये नहीं है कि चांसेस मध्यम पड़ जाएंगे। आई बिलीव कि फ़हीम अशरफ का भी बिल्कुल ऐसा ही हैज़ प्रूवन येट अगेन in the previous series or in this series that how vital his presence is in the side. तो फ़हीम अशरफ हैज़ बीन ब्रॉट आउट और दो चेंजेस जो उनके बिहाफ पे हुए हैं। फ़हीम अशरफ की जगह मोहम्मद वसीम जूनियर इज़ प्लेइंग गुड इंक्लूजन और अबरार अहमद जो कि मैं पिछले मैच में तो बहुत ही ज़्यादा पीट पीट के थक गया था और जो एक्सक्यूज़ दिया गया मीडिया को या आगे पीछे वो अबरार अहमद की हेल्थ कंसर्न्स थे कि ही हैज़ बीन आउट सिक। उनको कोई बुखार शुखार था जिसकी वजह से पिछले ओडीआई के अंदर ही वाज एक्सक्लूडेड। सो नाउ कमिंग ऑन टू द टॉस और उसके ऊपर डिसीजन करते हैं कि हाउ पाकिस्तान मतलब चोज टू बॉल फर्स्ट। व्हाट्स द थिंकिंग बिहाइंड द चेज ऑफ दिस मैच। जुमे का दिन है, जुम्मा सबने पढ़ लिया है, असर की अज़ानें होने लगी हैं। लेट मी गिव यू एन अपडेट अबाउट द स्कोर और फिर आगे हम और उन चीज़ों पे भी बात करते चलते हैं। 13.4 overs have been passed. कुशल मेंडिस is playing. Abrar Ahmed is going to bowl his last delivery. Let's see how he bowls. और वो bowling करने के बाद I will be able to tell you how 14 overs have been passed. एक सिंगल ले लिया है और 64 for 2 होंगे। तो अभी बॉल इधर अपडेट नहीं हुई बट मैंने देख ली है। तो सिंगल लिया है 64 for 2 बाय द एंड ऑफ 14th ओवर। तो अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स अदर टॉपिक्स लाइक प्लेइंग 11 भी है और फिर पाकिस्तान डिसीजन टू बॉल फर्स्ट। आई थिंक रात के टाइम बैटिंग करना आसान होगा इसीलिए क्योंकि ड्यू पड़ रही है, अच्छी खासी ड्यू है इन रावलपिंडी और ड्यू जो है वो मगरिब के टाइम ही शुरू हो जाती है पड़ना। तो उस वजह से भी एक फैक्टर ये है कि लास्ट मतलब जो ओवर्स होंगे उस पर बॉल ग्रिप करने का बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रात को इतना लेट नाइट मैच होगा। आई डोंट नो व्हाई दे चूजन दिस टाइम। दे कुड हैव मेड द कॉल टू द मैच अर्लियर एज वेल।
10-11 बजे भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड टाइम है आई गेस वो यही है। तो इट्स अ 4। अपडेट करता चलो, वसीम जूनियर को अभी रिसेंटली 4 पड़ा है। और श्रीलंका आर 68 for 2 राइट नाउ। तो बाकी ये है समरा विक्रामा जो है वो खेल रहे हैं, साथ कुछ सलमेंडस हैं, दे आर ऑल प्लेइंग। तो बाकी ये है कि टॉस का भी आपको समझ आ ही गई है कि इट मेड सेंस कि आप पहले बैटिंग की बजाय बॉलिंग कर लो और एंड में आप बैटिंग करो, क्योंकि जो बॉलिंग साइड होगी जो एंड में डिफेंड कर रही होगी उसके लिए इट्स विल गेट अ लिटिल बिट ट्रिकियर बिकॉज द बॉल विल गेट वेट। और फिर ग्रिप करना, बॉलिंग करना, इट्स गोइंग टू बी अ बिट ट्रिकी। तो सलमान अली आगाज़ के ऊपर बात लाजमी करनी है कि हाउ ही was chosen to captain the side, because Rizwan was replaced as captain by Shaheen Shah Afridi. So wouldn't it make sense to bring Mohammad Rizwan as captain? But considering कि जिस तरह से शाहीन का भी स्टेटमेंट आया that Rizwan did not wanted to be captaining the side and hence Shaheen Shah Afridi was brought as captain, but I believe that's a farce. I don't think it has anything to do with Rizwan wanting to step out. It was pure political decision based on number of factors why Rizwan was excluded or removed as captain, sacked as captain. तो उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, उसके ऊपर डिस्कशन हो चुकी थी, मैंने की है, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं रेपिटिवली अगर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँ दैट वाई रिजवान वाज रिमूव्ड, उसमें जो बेटिंग एप्स है वो वाला कंसर्न है, पैलेस्टाइन वाला कंसर्न है, देर आर ऑल्सो न्यूमरस इश्यूज बिकॉज अथॉरिटी वाइज भी रिजवान थोड़े से डिमांडिंग है। पीसीबी को थोड़ा यस मैन टाइप बंदा चाहिए, नॉन पॉलिटिकल बंदा चाहिए, नॉन रिलीजियस बंदा चाहिए। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो मोहम्मद रिजवान के ख़िलाफ़ बनते हैं। देयरफॉर ही वाज रिमूव्ड एज कैप्टन एंड देयरफॉर सलमान अली आगा कंपैरेटिवली अब more yes man as compared to Rizwan, a less practicing Muslim than मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा। तो और भी ये पॉलिटिकल फैक्टर्स होने के बावजूद कि मतलब थोड़ा रेजिलियंस सलमान अली आगा में इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल डिसीजंस, जियोग्राफिकल डिसीजंस जो है वो रेजिस्टेंस उनकी कम है एज़ कम्पेयर टू मोहम्मद रिजवान बिकॉज इज़ प्रिंसिपल लेड गाय। तो इस वजह से ही हैज़ बीन chosen to be the second captain, the vice captain of the team। तो प्लेइंग 11 की बात हो गई, उसकी भी बात हो गई। लेट्स गिव यू एन अपडेट रिगार्डिंग दी ओवर्स। So Sri Lanka is currently 71 for 2. Kusal Mendes 12 of 16, while Sadira is playing 2 of 4. वसीम जूनियर का स्पेल चल रहा है, साथ साथ अब्रार अहमद का स्पेल चल रहा है। अब्रार इज़ गोइंग टू बॉल द फर्स्ट बॉल और उसको प्लेस किया है टुवर्ड्स द पॉइंट फील्डर, गली फील्डर कह लें आप, एंड इट्स अ डॉट बॉल। और बाकी न्यूज़ जो है वो मैं आप लोगों के साथ 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 शेयर करता चलता हूँ कि व्हाट्सअप विद द अदर थिंग्स एज वेल। ACC Men's Asia Cup Rising Star Ma Sadakat named Player of the Match for his all-round performance, 96 not out and 2 for 14। Well done to Ma Sadakat साहब। सलमान बट का recent statement आया है, बाबर आजम has no technical fault, in reality we disturbed his mindset by asking to go and hit sixes and increase strike rate। Totally agree with Salman, but his natural game is always going to be play pure cricketing strokes. And when you ask a person with that caliber, with that kind of a mindset, with that natural ability to hit boundaries, score runs, and you ask him to slog, so he's not going to, it's not going to be easy for him. That is one of the biggest reasons why his form is completely out of touch, and
ICC uploaded a special reel on Instagram on Babar Azam reflexes and reactions. There's another famous catch जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेला गया था पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में, एंड हिज रिफ्लेक्सेस वर वेरी गुड एज अ फील्डर. शादाब खान की बॉल पे भी ये कैच उन्होंने लिया था, बहुत उम्दा कैच था इन द पास. तो आईसीसी ने अपडेट किया तो उसके बारे में भी बात होगी. और पीसीबी का और पीएसएल की कंटेंशन जो है सिटीज़ के अराउंड वो भी चल रही है, उसके बारे में भी अपडेट करता हूँ. फिर मैं स्कोर की तरफ चलूँगा, आपको स्कोर अपडेट दूंगा. दैट दीज आर द 6 cities that are contending for the upcoming slots for the cities in the HPL PSL 11. और इन चार सॉरी इन 6 में से 2 cities होंगे जो कि क्राउन होंगे, और आई बिलीव इट्स गोइंग टू बी सियालकोट एंड फैसलाबाद. अदर देन दैन आई डोंट थिंक रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद, गिलगित और हैदराबाद आर हैविंग एनी चांस. तो फैसलाबाद भी होगा और सियालकोट होगा. दैट्स व्हाट आई बिलीव. और क्या चल रहा है, ये स्टंप आउट था. दिस वाज द पिक्चर ऑफ सेकंड विकेट जो अभी आउट हुई है. स्टंप किया मोहम्मद रिजवान ने, बहुत ही ब्रिलियंट स्टंप इन अ सेंस के जो है रन आउट था. ये फर्स्ट विकेट है जो रन आउट हुआ, और सेकंड जो विकेट है वो स्टंप हुआ, बिकॉज द बैट्समैन वाज ऑन द क्रीज. he must have to be on some part of his feet should be behind the crease, और जो कि इस केस में नहीं था. तो सेकंड विकेट ऐसे आउट हुई और फर्स्ट विकेट पे रन आउट हुआ. तो बोथ ऑफ द डिसमिसल्स वर मेड बाय मोहम्मद रिजवान. जाहिर है ही इज़ अ विकेट कीपर बैट्समैन. सो मोहम्मद रिजवान की तरफ से कंट्रीब्यूशंस आती जा रही हैं. आप बेशक उसको साइड लाइन करते जाओ एज स्किपर, उसको इज्जत देना कम कर दें, बट अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे उसको कौन हटा सकता है. सो देयर इज़ दैट मोहम्मद रिजवान just bringing his involvement as much as to the team. His contribution is one of the reasons Pakistan have 2 wickets right now in the scorecard. Let's move on to the news section जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था. एक ये है, और क्या चल रहा है. हाँ, ये है राइजिंग स्टार. पाकिस्तान ने ओमान को बीट कर दिया बाय 40 रन्स, और उसके अंदर से इरफान खान नियाजी का एक कैच बहुत वायरल चल रहा था, तो आई थॉट कि वो कैच भी शेयर करना चाहिए. ये मोहम्मद रिजवान का मैं हैरान हूँ कि ये कैच इतना ज़्यादा वायरल हुआ है इंटरनेट के ऊपर. पिछले मैच में जो फर्स्ट ओडीआई में इन्होंने कैच लिया, दैट इन द सेकेंड ओडीआई भी अभी मैच को गुजरे हुए मेरा ख्याल 2 1 घंटे भी नहीं हुए, और वो मेरे ख्याल 2 दफ़ा वो 3 4 दफ़ा वो चला चुके हैं ये मैच बिटवीन इन द मैच. और यही वायरल है. बाबर आजम के फैंस हैं कह लो, जो भी है, एक करिश्मा कह लें, बाबर आजम का ऑरा कह लें, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, बट द ट्रूथ इज ही हैज़ अ मैसिव फैन फॉलोइंग अक्रॉस द ग्लोब. सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस दैट इसका इनका जो क्लिप है वो चल रहा है. अनदर न्यूज़ जो रात को हुई वो दैट वाज Mohsin Naqvi met with all of the Sri Lankan players, greeted them, thanked them, welcomed them to stay in Pakistan. क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से जो है थोड़े से कंसर्न्स थे श्रीलंकन प्लेयर्स के, दैट हैव बीन टोटली मतलब accommodated and settled by Mohsin Naqvi, the PCB chairman. He met the Sri Lankan team and shook their hands with Sanat Jasuria. वो काफ़ी वायरल जा रही थी पिक्चर. एंड इस पे चलते हैं, लेकिन एक चौका लगाया है, ब्रिलियंट स्ट्रोक टूवर्ड्स द डीप लेग फील्डर मोहम्मद नसीम को. तो पुल शॉट मारी थी बड़ी कमाल किस्म की सदीरा ने, plummeted front of square on the on side. Okay. तो हम बात कर रहे थे मोहसिन नकवी की, दैट ही ग्रीटेड पाकिस्तानी प्लेयर्स एज वेल और श्रीलंकन प्लेयर्स एज वेल. शाहीन भी यू कैन सी स्टैंडिंग देयर, हारिस रऊफ हैं, सलमान अली आगा हैं,
हुसैन तलत हैं, ऑल द प्लेयर्स आर राउंडेड अराउंड हिम, और अ बाउंसर फ्रॉम वसीम जूनियर, लेकिन ये वाइड दे दी गई है फ्रॉम द एम्पायर। और मोस्ट विकेट्स इन T20 T20 इंटरनेशनल टॉप 10 टीम्स में से मोहम्मद नवाज पाकिस्तान का चार्ट लीड कर रहे हैं। हारिस रऊफ इज़ वे डाउन, अबरार अहमद, शाहीन अफरीदी एंड फ़हीम अशरफ। मां सदाकत की, जैसे मैंने आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर की, अगेंस्ट ओमान उन्होंने मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर किया गया। इरफान खान न्याजी का बड़ा ज़बरदस्त कैच था। ये है टॉस की पिक्चर्स मेरी उस पर आई फीड पे, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करते चलते हैं। ये प्लेइंग 11 है श्रीलंका की। इन द सेकेंड ODI, ओनली वन चेंज फॉर द पीपल हु वर थिंकिंग कि भाई श्रीलंकन प्लेयर्स छोड़ के उस तरह से भाग जाएंगे और ये होगा वो होगा। सो सरप्राइज, ओनली वन चेंज इन द साइड। टू चेंजेस तो पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 में कर ली है तो उनकी तरफ से सिर्फ वन चेंज आया है। तो लुकिंग गुड। जितने भी नाकज़ीन हैं या जो जो चाहते थे कि क्रिकेट डैमेज हो, वो नहीं हो सकी। श्रीलंका की टीम, श्रीलंका की मैनेजमेंट स्टूड फर्म विद पाकिस्तान क्रिकेट। और ये जो दोस्ती का सिलसिला है दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर अ वाइल। और ये वार्म अप के जो कुछ हाइलाइट्स हैं, कुछ फ़ोटोज़ हैं, फ़हीम अशरफ प्रैक्टिसिंग, सलमान अली आगा और फ़खर जमान, साथ साथ सबके फेवरेट, सबके दिलों की जान बाबर आजम। अच्छा, अब आप इसके ऊपर कंपैरिजन करें अगर कि लाइक्स और कमेंट्स का, 115 फ़हीम अशरफ के हैं, 108 सलमान अली आगा के हैं, 231 फ़खर जमान ने, और 700, मतलब देखें कि डायरेक्टली 100 से 707 गुना फ़र्क है सलमान अली आगा फ़हीम अशरफ का, और ऑलमोस्ट 3.5 गुना से 4 गुना फ़र्क है फ़खर जमान का। That's the kind of love people have for Babar Azam. It's pretty tremendous and magical to see someone. बाकी ये मैंने आपके साथ सीन शेयर किया है। पाकिस्तान का जो टॉस हुआ और पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग का फ़ैसला किया, और उसके अंदर जो रीज़न है वो ऑब्वियस है, ड्यू टू ड्यू फैक्टर। सेकंड इनिंग्स के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगा खेलना कि किस तरह से इस टीम को मैनेज करना है, कैसे मैनेज नहीं करना। इट्स गोइंग टू बी ट्रिकी। बॉल वेट होगा। पिंडी इस्लामाबाद में मगरिब के टाइम से ही ड्यू शुरू हो जाती है, और मगरिब तकरीबन 5 सवा 5 बजे के करीब हो रही है इन रावलपिंडी। सो देयर इज़ दैट। और बाकी क्या चल रहा है, ये 35 बॉल्स पे 50 किसने बनाई है? मां सदाकत ने ही बनाई है। आई थिंक ये जो 96 उसने बनाया है उसी की 50 है। शान मसूद के ऊपर एक न्यूज़ चल रही है, हाईएस्ट फर्स्ट क्लास स्कोर। The Test captain of Pakistan, Shan Masood, scored a maiden 250 runs and registering his highest first class score. और एबटाबाद रीजन के खिलाफ he completed his 250 in just 238 balls, which included 28 fours and 6 sixes. तो well done to Shan Masood, going so strong, अच्छा कर रहे हैं। और लेट्स सी कि आज और क्या चल रहा है। बाकी पाकिस्तान का सेकंड ODI इज़ अंडर वे। प्लेइंग 11 तो ये खैर एमर्जिंग एशिया कप की है, मैं आप लोगों के साथ स्कोर ही शेयर करता हूँ ताकि यू कुड नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद द सेकंड ODI। बाकी जो गपशप है वी कैन डू इट। उसके साथ साथ लेट्स सी व्हाट पीपल आर सेइंग रिगार्डिंग द प्लेइंग 11। आप लोगों के खिलाफ से पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है वो कैसी है? डू यू फील शाहीन शाह अफरीदी तो अगर बीमार है तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास कोई चांस नहीं है उनको फटीक देना, इट डजंट मेक सेंस। बट फ़हीम अशरफ को निकालना और मोहम्मद वसीम जूनियर को इंक्लूड करना, और डिड दैट मेक सेंस और इज इट मी?
आई थिंक जो परफेक्ट प्लेइंग 11 इस मैच की होती है ना, अगर आप परफेक्शन मेरे हिसाब से पूछते हो, तो परफेक्ट प्लेइंग 11 वाज कि फ़हीम अशरफ खेलता इंस्टेड ऑफ वसीम जूनियर. आई कुड बी रॉन्ग, जस्ट like the last time when I didn't believed in Hussain Talat as much as I believed someone else, Abrar, for instance, because I was heavily relying on Abrar Ahmed. तो I wanted कि हुसैन तलत की जगह अबरार खेलते, but हुसैन तलत scored a terrific 50 which helped Pakistan winning that match. और एक एक रन्स की वजह से आप देखें कि वो बिल्कुल लास्ट बॉल तक उन्होंने मुकाबला किया. So that is where Pakistan has outshined and performed well in the side. क्योंकि अगर आप ये देखो कि हम लोग ये ले रहे थे कि जैसे कि बड़ी इजी से पाकिस्तान जीत जाएगा मैच, लेकिन इजी से नहीं जीता पिछला ओडीआई. इट वाज ऐसे कि बिल्कुल नेल बाइटिंग. वी weren't expecting that Pakistan could beat, मतलब सॉरी, श्रीलंका कुड बीट अस. बट व्हेन श्रीलंका, मतलब उन्होंने बिल्कुल माइलस्टोन पे माइलस्टोन, जिस तरह किसी रेस के अंदर चेक पॉइंट्स होते हैं, उन्होंने चेक पॉइंट्स बनाए हुए थे. स्मार्टली, स्ट्रेटेजिकली दे वर गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. their wickets were tumbling on the other side. Yeah, that's true, but they were smart in their decisions. They were मतलब smarter than us. बस थोड़ी सी उनसे एक मिस्टेक हुई, एंड एक बॉल के ऊपर जब आपका कॉन्टेस्ट आ जाता है तो इट्स आइदर वे. कोई वो बॉल इनसाइड एज लग के फोर भी हो सकता था, तो वी कुड हैव लॉस्ट दैट मैच इजीली. और जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेली, ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली है, मैंने पिछली लाइव स्ट्रीम के अंदर भी शेयर किया कि पाकिस्तान फर्स्ट पावर प्ले के अंदर 28 फॉर 1 था, जबकि Sri were 70 for without a wicket. So that's the kind of cricket we wanted to play. Or our head coach was telling each and every person that this is the kind of cricket, that brand of cricket Pakistan aims to play. But in reality, the opposition is playing that kind of a cricket that Pakistan wants to play, and Pakistan is totally opposing that. Who could have thought that Pakistan would play 21 consecutive dot balls in an ODI match? मतलब टेस्ट सीरीज के अंदर डॉट बॉल्स, दैट्स अनदर थिंग, दैट्स अनदर टफ. बट considering this format, ODI, white ball cricket, playing 21 consecutive dot balls, and I'm using the word consecutive repeatedly, and I wanted to emphasize on that word consecutively. It's a big deal. एक मेडन ओवर हो जाता है तो as a batsman you feel kind of traumatized that what is happening right now. I could not even play a single. The batsman loses his confidence, his ability, his emotional strength, his trauma, that what kind of a professional player I am, that I could not tackle that ball for a single run. And imagine going on to the pressure in the stadium and beating that 21 balls and then getting dismissed for nothing. मतलब आपने कोई 50 या 100 भी की हो, then we could have मतलब just realized that yeah, your decisions were based on that you wanted to play long, you wanted to just set assess the conditions, adopt to the conditions and play a big game. But both the batsmen who played 21 consecutive dot balls were Fakhr Zaman and Babar Azam, and they were dismissed for like 30 or 20 odd runs. And here's a wicket. Abrar Ahmed, takes a wicket. Kusal Mendes is out. A simple catch towards the deep, not deep, a short long on. 90 for 3. Pakistan looks good in the current scenario for sure. Pakistan looks pretty confident how they're going to win this one.
So here I am, Pakistan versus Sri Lanka, second ODI. The next batsman is on his way to the crease. It's Asalanka, Charit Asalanka, playing matches of 80, scoring 2600 runs with an average of 43, 17 50s and 500. So he's got all the top ingredients to play brilliantly in the middle overs. He's got in his resume a simple catch in the end. Kusal Mendes is dismissed. Sri Lanka 90 for 3. Second power play. So I was talking about the dot balls previously Pakistan had played. Let me share some interesting images. आगा जी अच्छा सब शाहीन का परेशान हो रहे हैं. They didn't knew that Shaheen is unwell, suffering from flu. तो ये बीबी शाहीन ने शाहीन जासी शाहीन ज़्यादा लिखना होगा इसलिए मिस्ड बाय इंचेस. तो ये प्लेइंग 11 है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की. और उसके अलावा सलमान अली आगा का इंटरव्यू था, हुसैन तलत का इंटरव्यू था. हियर आर द इमेजेस ऑफ श्रीलंकन साइड. चीयर्स पीपल फॉर द सेकंड ओडीआई. और ये लोग हैं, these are the kind of people, this is the kind of friendship you wanted to expect when you have a bad time in your region or in your neighborhood, whatever it is. So there's that. ये तो ओमान के साथ मैच है और पाकिस्तान का ये सिचुएशन चल रही है मैच की. Let's share the scorecard with you all. अच्छा, I wanted to ask people about 'Pakistan is on their way to attack. Mohammad Nawaz has been brought into the attack. 3 balls have been passed and a stop. "74 dot balls? Oh my god. 60% of the balls are dot balls. 74, which makes, oh my god, one out of 124, 74 dot balls. That makes it a 60% ratio. So Sri Lanka are not doing pretty good right now. They have lost the commanding position, but the amazing fact is that they have managed to return to maintain that strike rate, because they're only 20 runs behind, or 20 or 25 runs behind, if you ask me. 100 strike rate, much worse as compared to Sri Lanka, what they are playing right now. I think one of the biggest suggestions that any cricketers, people who are in the playing 11, is that when you lose the control of the match, for instance, sudden wickets are gone down,
then yeah, then I I can understand that there's certain amount of pressure that you need 1 or 2 to 3 overs to reclaim that momentum, but never compromise on the singles. People underestimate the ability of singles in white ball cricket, be ODIs or T20 internationals, but the importance is there. So you must take that responsibility of rotating the strike. That is pretty crucial aspect in every aspect of white ball cricket. People who dismiss the idea of taking a single, players who dismiss the idea of taking a run, finding the gaps, stop rotating the strike, that is where the problem starts. And another huge appeal, and umpire has given that out. Fourth wicket for Pakistan. Sri Lanka are 98 for 4. Let's see if Sri Lanka takes this down with the third umpire. And I think they're going for it. They're going to review. They have two reviews in the bag. They want to, and they've taken it. So Abrar Ahmed has struck his third wicket or third wicket. Let's see. Right on the money, and I don't think so. The batsman has any chance of going to of dodging this one right now. It's going to be plump, and that is the reason that umpire straight away went ahead with the finger. He did not waited for the appeal to linger more. He went straight with his finger. Absolutely no touch with the bat. Ball going on to the pad and it's straight plumb. Let's see where the ball pitches. Pitches on the line, onto the middle stump and click. Three reds. Pakistan has successfully taken another wicket, and this is the reason I was continuously talking about Abrar Ahmed in the last ODI. I was going on and on and on and on and on why Abrar was excluded in this side, why Abrar Ahmed, because he has established himself as the frontline spinner for Pakistan. His recent matches, if you take last 10 to 15 games, he has established that name for himself. He has taken that terms of evolving into a good leg spinner, you could call it, but he is justifying his place. He's cementing his place into the playing 11 in the white ball cricket for Pakistan, and this is great signs for Pakistan cricket. 6.2 overs, 21 runs given, and he has already taken 3 wickets out of 4. You could, one of them is a run out. So strictly speaking, Ibrar Ahmed has taken all the wickets at this stage of the game for Pakistan. This is what I'm talking about. Ibrar Ahmed. And the biggest surprising fact for me is that this is a nation, Sri Lanka is a nation that is very much uh, adaptive or very much agile in terms of attentive would be the appropriate word. Attentive in terms of playing spin, quality spin well. They are known to play spinners well because they come from a nation who has, if we talk about Mutaya Muralidharan, he has to be the best spinner of the world in terms of taking wickets. He has the most number of wickets and around 800 wickets in tests. So this is a nation who is known to play good cricket against quality spin, and this is why this is the most surprising for me in this match, that a nation who is known to play or tackle spin well isn't able to
deal with Abrar Ahmed right now? 7 overs have been passed of Abrar. 3 overs to go. Just taken 3 wickets. Pakistan in a commanding position. They're not even 100 right now. 20 overs have gone. Pakistan chose to field, and 60% of the balls are dot, which makes the ball 132. Out of 132 deliveries, they've managed 60% of 132 deliveries are dot balls. There, there's that gap that I was talking about earlier, that the most crucial aspect in the white ball cricket is taking singles. You may find it not easy to believe that how can taking a single be crucial, but it is what it is in my opinion, because these singles, the rotation of strike, directly impacts end of the opposition, we're that we're failing to intervene, we're failing to cut down their strike rotation, and that is what makes them frustrating, getting off, and the will of the opposition starts to let go. That how can we deal with that situation when the opposition is continuously taking singles and dodging deliveries? They are managing to. That is where when the problem starts and the opposition tries something out of the box, and hence therefore there is a lot of probability that they'll make mistakes, and when they do, it's your time to take advantage of that situation. So there is that. Muhammad Nawaz is bowling his fourth ball. Muhammad Nawaz is equally effective in this match, bowling at the economy of 3. Brilliant. Fifth ball has been dispatched towards the deep long on fielder for a single. Let's see how the over concludes. Sri Lanka are 100 completed for Team Sri Lanka. Goes on from here and out. Oh, it's a beat. So 23 overs have gone. Sri Lanka 100 for 4. 2 wickets more, and they are on to the tail. And I feel that Pakistan does have that capability to restrict them before 200. I think anything around about 160 or 70 is going to be a bit easier for Pakistan to win this contest, but let's see where it goes on from here. If Pakistan deals or does this well. Oh, the first ball has been dispatched towards the boundary, or Abrar Ahmed has been brought into, is continuing his attack, but his ball was dispatched towards the long on region. It's a 4 or a 6. Umpires are looking closely to the ball. It's going to be the first 6 of Sri Lanka's innings, because it has hit the boundary rope directly. So I think it's going to be a 6. But let's see what the umpire's call is. From another angle, it looks that the ball bounced before touching the rope. This is tricky, but it's a 6. It's a 6 from the batsman.
Liange hitting Abrar Ahmed aggressively towards the boundary rope and stopping the ball. The second ball is a dot ball. Abrar Ahmed playing on to his A game. What will be his next move? That's the ultimate question. Again, into the wicket and no opportunity of a run out, but he will try to hit a direct hit collected by the long on fielder, backing that ball up. Brilliant shot. They're showing the highlights of his first ball that was pulled away for a six. Put away for a six, not pulled away. Sorry. Abrar Ahmed is looking terrific in his form. He has played exceptionally well in the previous series. He is doing good in this series as well, missing this game, first game, and now coming back and dominating from the day one. And another decision appealing. Will Pakistan go for a review? Doesn't look like it. Salman Ali Agha talking with Mohammad Rawaz about continuing his spell. Salman Ali Agha leading the side today because Shaheen Shah Afridi is out due to the flu symptoms. Pakistan are 108 for 4. 24 overs have been passed, and one more over till the half time. Beautiful scenes at the cricket are being shared on the TV right now. Terrific day to play cricket. It's not an ideal weather, but it will get cold. It looks good conditions. Crowd is building up in the stands. Rawalpindi, always known to be filling the stadium. People are showing up. A little time left, only in half an hour left till we have the lights go on. Lights are already on, but the natural light is going to be missing after a few minutes. Mohammad Nawaz continuing his spell. 2 deliveries has gone and 2 singles taken. Let's see what he does with the third ball. Off he goes towards outside off stump and he cut it brilliantly. Sadira waited for the ball and dispatched towards the third man region. Brilliantly cut. Fully middled it and placed it towards the third man. The third man was up. Fielding restrictions. Let's see how this goes on the first ball. Into the middle stump. Mohammad Nawaz tried to collect it, but he missed it. Long on fielder collected the ball and they took a single. Let's see about the second last ball of Mohammad Nawaz over and where Abrar Ahmed complete his 10 hours right now. Will Agha Salman save the last 2 for later? That is the ultimate question. 1 ball remaining until 25 overs.
gone, Sri Lanka had 1 sixes, 11 fours, 50 runs in boundaries. 58% of the balls they faced are dot balls. They take away a single, and Sri Lanka are 117 for 4. If you look at Pakistan's bowling, Naseem bowled 4 overs with an economy of 3.5. Rauf bowled 4 overs with an economy of 7.75. A bit expensive, yo. Wasim Jr. 5 overs consumed 22 runs with an economy of 4.4. Abrar is outstanding with 8 overs, 30 runs consumed, 3 wickets, 3.75, and Mohammad Nawaz bowled 4 overs, consumed 18 runs. And I was thinking about it that if Abrar Ahmed's 2 overs are remaining, then why not save it for later and bring Saim Ayub back because he bowls as well. And I was thinking, and Saim Ayub has been brought into the attack. So the first ball dispatched towards the long off, deep long off fielder, a single run taken. Saim Ayub continues to bowl. One of the most interesting start you will ever find is the bowling of Saim Ayub. Saim Ayub has dismissed 90% and he has the most wickets to take to dismiss the top 6 batsmen. I want to repeat myself again. When it comes to taking or dismissing the top 6 batsmen, the highest percentage of wickets the player has is Saim Ayub. Not Naseem Shah, not Mohammad Nawaz, not Shaheen Shah Afridi or any other batsman who has the highest number of percentage of dismissing the top 6 batsmen. 90% of the top 6 batsmen were dismissed by the ball of Saim Ayub. Plays a late cut collected by the point region. Saim Ayub bowled his 4 balls, consumed 3 runs, 3 singles, and a dot ball outside off stump, placed towards the deep cover fielder, will take a single. First over, will he be able to take a wicket? Because Pakistan only needs 2 before they get to the tail. So the over is gone, 4 runs taken. It's 121 for 4.
The partnership is developing between the two batsmen. Pakistan needs to tackle this one, because if they're going to get any momentum, they will take away this match from you. Saim Ayub continuing his spell. 5 overs consumed, one in this over. Saim Ayub completes his second. Sri Lanka 128 for 4. Almost missed this one. What do you think is a competitive total on this ground right now? Feel free to leave your thoughts in the comments below. And Pakistan have utilized 6 bowlers: Naseem Shah, Haris Rauf, Wasim Jr., Abrar, Nawaz, and Saim. The most expensive among these 6, I don't think I need to name him. He's as expensive as his speed is. Let's see what he does. Mohammad Nawaz to continue. First ball. Brilliantly paid towards the point fielder. Second ball. And played aggressively towards the boundary side, towards the deep square leg fielder. And it's a 4. Sadira taking that momentum. Sri Lanka team is needing, being aggressive, finding that loophole in the Pakistan fielding side and executing it to perfection. For Team Sri Lanka right now, taking singles, hitting a 4, then the next ball lodging towards the what's the fourth ball is going to be. He tried to cut it, but the short cover collected. Oh my god, I'm not sure if they took a single, but yeah, they did. Amazing with the bat. They're playing intelligent cricket, Sri Lanka, right now, and that could be expected of them. Brilliant. Stopped it. It's going to be a dot after a while, which we didn't thought was possible. Intelligent cricket. Last ball of Mohammad Nawaz's over. How Sadira is going to place that one? That's the question. And the answer is a sweep just behind the keeper and the leg slip fielder, and it has dispatched towards the boundary rope. Fine leg fielder couldn't collect it. It's a 4. It's behind the keeper, between the legs, and straight back of the keeper. Dispatching for 4. Sri Lanka are 138 for 4. 29 overs gone.
Sir Haris Rauf has been brought into the attack surprisingly, and a misfield, almost missed it and was away for a boundary. Haris Rauf, the gun machine, the speed machine, or the runs consuming machine, has been brought into the attack. Let's see what he does. Was seemed a slow ball and just a fumble. It was almost racing towards four, but Wasim Jr. collected it. A single given, a single more to the total. Second ball. 3 runs off his first delivery, and second is going to be a dot ball. A brilliant shot, elegantly placed towards the deep cover fielder, collected the ball, and Rizwan missed it, but no problem. The fielder behind Rizwan collected it, dispatched towards the fielder. And the commentators are having fun. Wakar Yunus is sitting with Arnold. They're having a good time in the commentary. Single taken. Let's see how the fourth ball goes. Cut towards the third man region. The third man fielder wasn't able to collect it because it was hit towards the deep third man region. Third man and deep back point, backward point. The fielder between the third man and deep back point, brilliantly placed. Liange facing the second last ball of the over, and Haris Rauf has already been dispatched 8 runs of the first 5 delivery, and it's going to be a dot ball. Agha Salman collected towards the cover region. Wow, what a stroke towards the extra cover. The dot, although it was a dot ball, but it was a sight for the eyes to witness. Great ball. And ball towards the leg stump, and the batter simply stopped it, and the short leg fielder collected it. So Sri Lanka are 146 for 4, 13 or 30 overs have been passed.
Saim Ayub has been brought into the attack. Plays towards the leg slip fielder. It's not a leg slip. What would you call it? Backward square. A person between short fine leg and backward square collected it. The second ball towards the cover region. A dot ball. Shaheen Shah breathing on the bench. Third ball. Brilliantly done, but the point fielder had a bit of hand to it and slowed the ball off. Babar Azam is standing towards the point. He was on the slip and now on the point. Babar Azam making sacrifices for the team, and yet some people hate him for no obvious reasons. And dispatched towards the deep point fielder. Great shot in the air for a little while, but the deep point fielder collected the ball. And now, second last ball of the 31st over, and it's a full toss. Brilliantly placed towards the fine leg, the space between the deep back square leg and the fine leg fielder. A couple of runs taken. The last ball remaining. Saim Ayub getting ready to deliver his last ball of the over to complete his 3 overs. And sweep shot, brilliantly played towards the fine leg. The fine leg fielder was at deep back square. Fine leg was empty and the sweep shot was hit powerful, and it's dispatched away for a boundary. Sri Lanka 156 for 4. 31 overs have passed.
And a wicket by Haris Rauf. Oh my god, the ball swing in late. You could say was the pitch. Dismantled the off stump, and Haris Rauf took his first wicket after consuming 42 runs in the sixth over. The ball turned sharply in swing towards the off stump and shattered it. Sadira gone. Sri Lanka are 159 for 5. Haris Rauf dismisses Sadira, and the partnership is broken. So Pakistan is on their way. They're playing quite decently, but it's a break in the ground. I don't know why. What the reason is a wicket, obviously, but it's taking more than the time and than anticipated time. Let's figure it out. What's the reason behind the delay? Well, if you look at the scorecard, Ibrar Ahmed has dominated the Pakistani bowling lineup because he has taken 3 wickets. One of them is a run out, and now the Haris Rauf's dismissal, which dismantled the off stump. Brilliant bowling from Haris Rauf, but not that well brilliantly because he has consumed. He's the most expensive in the bowling lineup for Pakistan. Saim Ayub going a bit decent. 3 overs, 15 runs consumed, and Sri Lanka's highest scorer dismissed for 42, just a ball before bowled by Haris Rauf. The ball termed swing in sharply and dismantled the off stump of the batsman. Sadira was the last man to be dismissed. Let's see who comes in. There is a pause on the screen. I cannot tell you why. Haris Rauf continues, and an action replay. The seam was perfect. It was a speed who dodged the batsman. Maybe it was the pace, maybe it was the pitch, maybe it was the bounce, but that ball sure turned sharply. It was fast and the furious, ladies and gentlemen, hugging all around the ground. There is a pause when the game returns. I'll tell you why. From Pakistan's bowling perspective, Naseem Shah bowled the 4 overs, consumed 14 runs, and we are back into the game. No. Oh, Kamindu Mandis. 26 matches, 473 runs. Will face Haris Rauf, taking guard, getting ready to face the fastest of the Pakistani bowling lineup. Well, I think Haris Rauf has been tried the first over, but he wasn't playing that well. To be honest, new ball with Haris Rauf is not a good idea. Haris Rauf is always going to be good in the death or in the middle. I don't know what
needs to be done with Haris Rauf in order to become a new ball bowler. But he does not have that ability to bowl in the right areas and swing the ball in the first few overs, because Haris Rauf bowled at least 4 to 3 overs in this game with the new ball, but he was dispatched and consumed an economy of 7, which is pretty expensive considering and comparing with the other bowlers in the Pakistani lineup. So the overs over. Sri Lanka are 160 for 5. 32 overs have passed. So Naseem Shah is continuing his spell. 4 balls have been gone. Pakistan's bowling performances in the 26 to 40 overs. Pakistan won 44 wickets in the 12 matches since 2024. Straight drive. The long on fielder collected it. Comindo Mendes hasn't opened his account. He's playing on 0.
Let's see how this goes. Playing upside towards the long on, and it's going to be a 4 uppish. No fielder was at the long on, deep long on. Naseem Shah just bowling in the slot and getting punished for it for a boundary. The lights are on, and Sri Lanka are 166 for 5. मैच तो साथ चल रहा है, न्यूज़ भी साथ साथ आप लोगों को साथ शेयर करते हैं। हारिस रऊफ को ओवर में बुला लिया गया है, पॉइंट फील्डर के पीछे से कट किया। ये है वो स्टंप जिसकी मैं बात कर रहा था, जो बहुत ही इंटेलिजेंटली रिजवान ने स्टंप किया। इट वाज ऑन द लाइन, and the rule of cricket says that some part of the foot must be grounded behind the line in order for you to be not out. But brilliant from Mohammad Rizwan, he collected the ball, and the first 2 wickets in this match are thankfully to Mohammad Rizwan, because it is Mohammad Rizwan, because the first run out was done due to a good throw, obviously, and secondly, good keeping as well. So the first run out and then this stumping, Mohammad Rizwan continues to contribute in the Pakistan's team's success, while he has been ignored by the selectors for not being the second choice of captain in this ODI. Salman Ali Agha have been brought into the attack. And look at this, ladies and gentlemen. These are the scenes from Pindi Cricket Stadium, where people are holding flags of Sri Lankan nation. They're thankful, they're grateful for the support of friendship. That is what Pindi people, or the people of Pakistan, wants to thank the Sri Lankan community. They are here to support the Sri Lankan nation. Look at this. These are not paid campaigners. These are the common people of Pakistan supporting the Sri Lankan nation in the ground. Amazing scenes. Look at the support in the Pindi Cricket Stadium for the Sri Lankan team. Amazing. And there was this. I told you earlier about this run out, brilliantly thrown away by Mohammad Wasim Jr. Two of the dismissals in the today's innings are from Rizwan. First is the run out, and the second one was a stumping. Let's see. This is happy birthday, Rashid Latif. I didn't knew it was a birthday. Okay. Happy birthday from Cricket Ki Baat is platform ke through. We would like to wish Rashid Latif a very happy birthday. But coming back to the score, Sri Lanka are 175 for 5 there, gaining momentum back, and Pakistan needs a wicket. Haris Rauf continues his spell. Brilliant Yorker, लेग साइड के ऊपर यॉर्कर दिया, और फाइन लैप और डीप स्क्वायर लेग फील्डर के दरमियान बॉल गई, और जो डीप स्क्वायर लेग के ऊपर फील्डर था उसने बॉल को कलेक्ट किया, थ्रो किया, एंड अ सिंगल टेकन.
तो लियांगे जो है 31 of 36 with 1 4 and 1 6s. This is what I'm talking about. The ability of rotating the strike. Oh my god, the stadium looks so beautiful right now, lit up. सब कुछ ग्रीन हुआ हुआ है और उसके अलावा जितना भी है मगरिब का टाइम है, ब्लू ही ब्लू है. अमेजिंग सीन्स ऑफ द क्राउड, अमेजिंग सीन्स ऑफ द ग्राउंड, ब्रिलियंट. फाइन लेग फील्डर के ऊपर किया और फंबल हुआ और एक सिंगल लिया. नसीम शाह थे फील्डर, फाइन लेग पे मौजूद. 34 overs have gone. श्रीलंका 177 for 5. And this over, ये जो अभी ओवर गुजरा है, इस ओवर के अंदर was the most expensive over in today's श्रीलंका's innings. 1 2 3 4, 4 और 6 10 रन बन गए एक ही ओवर के अंदर. और इस ओवर के अंदर, इस मैच के अंदर किसी भी बॉलर को अभी तक एक ओवर में 10 रन नहीं पड़े. तो दैट रिफ्लेक्ट्स यू द काइंड ऑफ इम्पैक्ट हमारे हारिस रऊफ साहब का है. बीइंग एक्सपेंसिव ऑल द टाइम. नसीम शाह बॉल करेंगे अब नेक्स्ट ओवर. और बीच में अगर अजान होने लग गई तो अजान सुनी जाएगी. तब तक यू कैन सी द स्कोर बोर्ड कि व्हाट्स हैपनिंग. मैं कमेंट्री रोक दूंगा उसके लिए. तब तक लेट्स सी. नसीम शाह बॉल करने आ रहे हैं नेक्स्ट ओवर. नॉट टू forget that Ibrar Ahmed's 2 overs are remaining. He took 3 wickets, crucial wickets, dismissing the top order batsman. स्टॉप किया. कवर और पॉइंट फील्डर के दरमियान में से बॉल गई. डीप पॉइंट वाले फील्डर ने आके बॉल को कलेक्ट किया. लियांगे 31 of 38. In 30 matches, he has scored impressive 883 runs, highest score. अजान के बाद बात करते हैं.
वसीम जूनियर हैज़ बीन ब्रॉट इनटू द अटैक। स्क्रीन मेरी स्ट्रक हो गई है। सिंगल लिया है फर्स्ट बॉल के ऊपर। तो व्हाट डू यू गाइस फील, जो भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, कि पाकिस्तान का क्या कंपेटिटिव स्कोर होना चाहिए यहाँ से? बिकॉज करंटली मेरा ये मानना है कि यार देखो, शाहीन वैसे तो ये है कि अच्छी बॉलिंग करता है, अगर आप हारिस रऊफ से कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। विकेट्स के बारे में तो ठीक है, हारिस रऊफ हैज़ बीन अ विकेट टेकिंग बॉलर, लेकिन हमेशा से ये चीज़ अंडर डिबेट रही है कि इसको न्यू बॉल देनी चाहिए या एंड वाली बॉल देनी चाहिए या मिडल में यूटिलाइज करना चाहिए। मेरा बड़ा एक फर्म से स्टांस है रिगार्डिंग हारिस रऊफ दैट ही शुड बी यूटिलाइज्ड इन द मिडल और इन द एंड। ट्रमेंडस डिलीवरीज यार, जो भी मैच जो है ना इस टाइम चल रहा है, वसीम जूनियर इज बॉलिंग ट्रमेंडसली। इतना परफेक्ट सीन पोजीशन था, बॉल लेट स्विंग हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, और बहुत कमाल की बॉलिंग वसीम जूनियर इस टाइम कर रहे हैं। दो बॉल्स हो गई हैं, एंड आई डोंट थिंक सो कि इससे अच्छी बॉलिंग करंटली कोई कर रहा है। क्योंकि मैंने अभी नसीम शाह के ओवर्स भी देखे हैं, साथ साथ मैं हारिस रऊफ को भी देख रहा हूँ, और जो बॉल जिस तरह से रिवर्स वसीम जूनियर कर रहे हैं, इट्स एफर्टलेस। और लियांगे जो हैं वो 33 पे हैं, कमिंडो जो है वो 14 पे हैं, जो टॉप स्कोरर है उसने 42 रन्स बनाए हैं, और पार्टनरशिप आहिस्ता आहिस्ता से डेवलप हो रही है। एट वन स्टेज दे वर लाइक 98 for 4, and they have now managed to be 181 for 5. So there is something that Sri Lanka is doing right. It's just like replicating Pakistan. A few days ago, Pakistan were 135 for 5, and then they end up scoring 270 and 80. And on the other game, वो भी उसमें 130 पे पाकिस्तान, चार खिलाड़ी आउट थे, एंड पाकिस्तान मैनेज्ड टू कंप्लीट 299। तो दिस टेल्स, ओ इट्स अ बिग बाउंसर। रिजवान को बहुत ऊंची जंप मारना पड़ी मेरे ख्याल से। इतनी ऊंची जंप मारी कि रिजवान की तो बिल्कुल शक्ल ही गायब हो गई कैमरे से, इतनी ऊंची। और इतना लंबा बाउंसर, भाई कौन से आलम चन्ना को बाउंसर करा रहे हो भाई वसीम जूनियर भाई? और इतना तो आलम चन्ना भी ऊंचा नहीं होगा। और खैर रिजवान को दाद देनी पड़ेगी कि भाई आलम चन्ना जैसे इंसान को बाउंसर कराने के बाद, मतलब आलम चन्ना है तो नहीं, लेकिन ये है कि उसने बॉल कलेक्ट कर लिया, बाइज नहीं हुआ चार रन्स का। सो रिजवान की बड़ी एफर्टलेस जो है विकेट कीपिंग है, ब्रिलियंटली डन। सेकंड लास्ट बॉल वसीम जूनियर की, सिंगल रन्स स्कोर्ड, और वसीम जूनियर अभी तक सिर्फ 4.45 की इकॉनमी के साथ रन्स कंसीड कर चुके हैं। इट्स डूइंग गुड। लेट्स सी हाउ दिस मैच अनफोल्ड्स। बट ये है कि ब्रिलियंटली डन। और एज हुआ, और स्लिप के फील्डर से बॉल टच होके सीधा सीधा बाउंड्री की तरफ गया। बहुत अच्छी बॉलिंग की वसीम जूनियर ने, बट दैट लैक ऑफ स्लिप की वजह से ये इतना अच्छा ओवर महंगा साबित हो गया और रन्स कंसीड हो गए। ग्रेट बॉलिंग, ग्रेट एफर्ट, 10 out of 10 in terms of effort, in terms of delivery, but it was a bad luck that it got a tickle and raced away towards the boundary rope. Sri Lanka developing partnership. Pakistan wants to fight back, and I think this is the time to bring back Abrar Ahmed into the attack, because since the new batsman Abrar Ahmed hasn't bowled a single ball, so he have 2 overs left in his pocket. So why not utilize it here rather than late? But Naseem Shah has been brought into the attack और स्लाइस किया है towards the deep square leg fielder, और 2 runs taken.
नसीम शाह इज बॉलिंग गुड। जो सेकंड लास्ट ओवर था पिछले मैच का, जो नसीम शाह ने बॉलर करवाया, पाकिस्तान नीडेड टू डिफेंड 24 आउट ऑफ 12 डिलीवरीज, उस पे नसीम शाह ने 2 या 3 रन्स दे के जो ओवर करवाया था, इट वाज मतलब प्राइसलेस। जिस तरह से नसीम शाह ने पिछले मैच के अंदर सेकंड लास्ट ओवर मैच का करवाया था, आई थिंक कि वो नसीम शाह की ओवर की ज़िंदगी का मेरा ख्याल बेस्ट ओवर होगा। इतना अच्छा ओवर उसने आज तक कभी नहीं करवाया, लेकिन आज भी वो कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, वक्त के साथ साथ एज अ प्लेयर, एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर, you are evolving always, you're learning new things, you are getting to know a little bit of knowledge every single day in order to be in order to do a good job, a better job for yourself, for your team. So that continuous involvement plays a crucial role in terms of player development. And a bouncer, making sure it's not a wide, it isn't a beat. Umpire has given one for the over. Now look at Naseem's economy. It's one of the best economies in the Pakistan team right now. अगर आप stats compare करेंगे बाकी bowlers के साथ, which we will by the end of this innings, but looking at it right now, it looks good. Naseem Shah is setting up the field. थर्ड मैन के ऊपर फील्डर को थोड़ा सा वो वाइड करना चाह रहे थे। लेट्स सी व्हाट कट किया टुवर्ड्स द पॉइंट फील्डर, नो रन्स टेकन, 4 overs conceded in this over. लियांगे 37 पे खेल रहे हैं, कमिंडू 19 पे खेल रहे हैं। एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर कि जिस तरह से श्रीलंका के क्राउड को, उस श्रीलंका के प्लेयर्स को सपोर्ट क्राउड से मिल रही है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, विल यू इमेजिन टू सी दीज काइंड्स ऑफ सीन्स। बेहतरीन सीन्स यार, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है आवाम को। हारिस रऊफ का ब्रेक थ्रू जो था, वो ये पुरानी न्यूज़ है, जो उन्होंने आउट किया है, ऑफ स्टम्प शैटर किया, बड़ा कमाल है। अच्छा, ये जो सीन्स है ना, ये अब आप देख लें कि ये क्या क्लेम कर रहा है कि एम्प्टी है, एम्प्टी है। और असल में इस एम्प्टी के पीछे मैं आपको सीन्स बताता हूँ। ये दोपहर का टाइम है और जुम्मे का वक्त है। सो व्हेन मतलब जुम्मे के वक्त के टाइम पे कोई भी ऑब्वियस सी बात है, मैच तो क्या, कोई रैली भी होगी या कोई जलसा भी होगा, उस पर भी कोई लोग नहीं होंगे। तो अब आप पाकिस्तान, अगर आप ये समझते हैं कि ये सच है, तो आप ये देखें कि जुम्मे के बाद से मैच के अंदर लोग आना शुरू हो गए। एंड बाय द एंड ऑफ दिस मैच यू विल सी, और करंटली आई एम seeing on the screen right now that crowd is has filled almost the Rawalpindi cricket stadium. So there is no truth to it कि जनाब फैंस जो हैं, हाँ उस वक्त पे एम्प्टी, ऑब्वियस सी बात है, मैच के शुरू के अंदर तो एम्प्टी ही होगा। एंड दिस इज द ट्वीट, इट्स प्लेड। अच्छा, साथ साथ मैच की भी आपको अपडेट करता हूँ। अभी एक चौका लगाया है मेंडिस ने, बड़ा बेहतरीन किस्म का, नसीम शाह को अप इन द एयर खेला था टूवर्ड्स द डीप लॉन्ग ऑन साइड, और वहाँ पे प्लेस किया। फील्डर कोई नहीं था, जगह की यूटिलाइजेशन बहुत कमाल की थी। आमिर जमाल पे बात करेंगे। थैंक यू बोला है श्रीलंका का फॉर स्टैंडिंग विद पाकिस्तान क्रिकेट इन दीज टफ टाइम्स। तो जाहिर है आमिर जमाल का भी अब जिस तरह से एक बात थी शादाब खान की, वो करनी है, और उसके साथ साथ ये आमिर जमाल वाली बात को भी डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि शादाब खान इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं और उनको ना कोई डोमेस्टिक खिलाई गई, ना कोई कुछ खिलाई गई, और डायरेक्टली टीम के अंदर लाया जा रहा है। और
ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा बनाया जा रहा है। क्या अगर आमिर जमाल भी इसी इसी वजह से बाहर हुए होते कि उनको इंजरी हो जाती, तो क्या ये प्रोटोकॉल उनको भी मिलता? क्वेश्चन फॉर यू ऑल टू डिसाइड। अच्छा, रऊफ के ऊपर डिबेट स्टार्ट हुई है कि Rauf may take wickets, but his pace has dropped. Shoaib Akhtar had an aura. Harif isn't close. No swing, no consistent line or length. Anyone can take wickets with endless chances. And honestly, if 15-20 runs are needed in the last over and Rauf is bowling, as a Pakistani, we all know that batting side is still favorite. You're 100% not right, 80% right. आज की जहाँ तक आपने कहा ना, नो स्विंग, नो कंसिस्टेंट लेंथ, तो जिस बॉल पे उसने आउट किया दैट हैज swung pretty sharply, so you need to watch that replay before you make that comment on हारिस रऊफ. सो हारिस रऊफ की तो बात हो रही है, लेकिन ही हैज़ बीन नोन एज कंसीविंग रन्स, मतलब हमेशा से ही हैज़ कंज्यूम रन्स और wasn't able to justify his economy. और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है, और इट्स अप इन द एयर. फाइन लेग फील्डर के पास गई और बॉल कलेक्ट किया, लेकिन यह बॉल थप्पा लग गया, इट वाजंट आउट. तो दोनों बैट्समैन आर काइंड ऑफ सेट इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी. दे हैव मेड pretty good runs. In the last 5 overs, 37 runs have been scored with an economy of 7.4 runs per over. So they're building. One run to go till they complete the 200 for Sri Lanka. Wasim Junior is bowling. He's going to bowl his last ball, and 3 runs conceded on this over. Wasim Junior is also bowling terrifically in this match. पिछले ओवर की लास्ट बॉल पे अनलकी रहे कि स्लिप फील्डर नहीं था, वरना ये कैच था. अभी तक तो वसीम जूनियर हैज़ बीन बॉलिंग एक्सेप्शनली वेल. प्लेस किया टुवर्ड्स द फाइन लेग फील्डर और सिंगल कंप्लीट किया. तो 4 runs have been consumed in this Wasim Junior's over. 38 overs have gone. Sri Lanka 200 for 5. And we were talking about नवाज को थोड़ी सी धुलाई शुलाई हुई है, बट अबरार अहमद, आई एम सरप्राइज कि अबरार अहमद को अभी तक ओवर नहीं दिया जा रहा. he has taken the most wickets in this match. इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है मैच के ऊपर, लेकिन उसको ओवर नहीं दिया जा रहा. वाई इज़ दैट? और इसके बारे में भी एक क्वेश्चन ये है कि जो फर्स्ट ओडीआई था, जब इसको ड्रॉप किया गया तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो वाई डिडंट द मैनेजमेंट चूज फैसल अकरम एज हिज रिप्लेसमेंट, एज स्पिन रिप्लेसमेंट जो है वो अबरार का फैसल अकरम है स्क्वाड में. तो वाई वाजंट फैसल अकरम गिवन द चांस इंस्टेड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द फास्ट बॉलर? क्वेश्चन है. तो लेट्स सी व्हाट पाकिस्तान टीम डज इन दिस मैच. बाकी ये जो कुछ मैच की हाइलाइट्स के सीन हैं वो साथ साथ चल रहे हैं. श्रीलंका के बैट्समैन खेल रहे हैं. 42 रन्स की पार्टनरशिप बन चुकी है अब तक. 41 बॉल्स पे 200 हो गया श्रीलंका का करंटली, 5 विकेट्स के नुकसान पे. एंड लेट्स सी हाउ दिस गोज. नसीम शाह इज बॉलिंग. लेग स्टंप के ऊपर बॉल की, टिकल किया टुवर्ड्स डीप स्क्वायर लेग फील्डर पे, सिंगल कंप्लीट किया. तो नसीम शाह ही इस टाइम करंटली बॉलिंग कर रहे हैं, और साथ ही साथ मैं आपको मैच की अपडेट भी दे रहा हूँ. 2 बॉलें करवा ली हैं नसीम शाह ने. तीसरी बॉल नसीम शाह करवाने लगे हैं. जब तक करवाते हैं हम और भी देखते हैं. स्टेबिलिटी के साथ बहुत, मतलब
श्रीलंका की इस टाइम क्रिकेट टीम बहुत स्मार्टली खेल रही है। एक आध इन्होंने डिसीजंस गलत लिए, फॉर इंस्टेंस आज इन्होंने जो रन आउट की पहली पे गलती की, जो पहला डिसमिसल हुआ इनका, दैट वाज प्रिटी अननेसेसरी। इनको नहीं चाहिए था कि ये जो रन आउट हुआ है ये वो करते। बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे थे ओपनिंग बैट्समैन, और स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेल दिया नसीम शाह को। इट्स गोइंग टू बी ए फोर और समवन गोइंग टू कलेक्ट। साइम अयूब ने कलेक्ट किया लॉन्ग ऑफ से भागते हुए, और साइम अयूब ने रिजवान को थ्रो दे के कलेक्ट कराया। 4 runs have been conceded in this Naseem Shah's over. Let's see how this goes again. This is the run 204 for 5. 38.3 overs have gone. Let's see how Sri Lanka finish. They be able to make 300, because this is a possibility. In the last match, Pakistan at this stage was not even 200, or Pakistan managed to score 299. अपील की गई है, ह्यूज अपील। सलमान अली आगा आस्किंग नसीम शाह टू टेक और नॉट द DRS। लेना है 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, एंड द टाइमर इज ऑफ। अपील ज़रूर की गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने रिव्यू नहीं लिया। पाकिस्तान के दोनों रिव्यू मौजूद हैं। इट मीन्स दिस वॉजंट क्लोज एट ऑल। अच्छा, आर्टिकल एज की अपील थी और बॉल बहुत ज़्यादा गैप पे था भाई, नॉट इवन क्लोज। तो अपील किस चीज़ की थी भाई? ये तो इतना ज़्यादा दूर से था कि जिसकी कोई हद नहीं। सो नसीम शाह इज कंटिन्यूइंग विद हिज ओवर, अ डॉट बॉल के बाद लेट्स सी व्हाट्स द बॉल इज गोइंग टू बी। 2 रन से कंप्लीट किया सेकंड लास्ट बॉल रिमेनिंग ऑफ नसीम शाह। 8 ओवर्स गुजर जाएंगे नसीम शाह के, फिर 2 ओवर रह जाएंगे। कितना सार टारगेट सेट करना चाहिए श्रीलंका की क्रिकेट टीम को एट दिस स्टेज एंड एट द स्पीड दे आर प्लेइंग? आई थिंक एनीथिंग बिटवीन 300 और 320 इज अचीवेबल। बहुत ही प्यारी लॉन्ग ऑफ के ऊपर बॉल खेली थी, लेकिन फील्डर मौजूद, डॉट बॉल होगी। और इसके साथ ही नसीम शाह को 8 ओवर कंप्लीट हो गए। ही इज कंज्यूम्ड 36 रन्स ऑफ 8। 2 ओवर्स नसीम के पड़े हैं, 3 ओवर हारिस रऊफ के पड़े हैं, वसीम जूनियर के 3 ओवर पड़े हैं, अबरार के 2 पड़े हैं, नवाज के 4 पड़े हैं, और साइम अयूब के 7 ओवर्स पड़े। लेट्स सी व्हाट सलमान अली आगा डज। For the people who are not aware that Shaheen Shah has been not playing this ODI match because of flu, so Salman Ali Agha is captaining the side, and he is not introducing Ibrar Ahmed, and I don't know why. और मेरी सुन ली गई, अबरार अहमद हैज़ बीन ब्रॉट इनटू द अटैक। मैं यही बात कर रहा था काफ़ी देर से, दैट अबरार अहमद is the most crucial person to bowl for a long time, क्योंकि जब भी इनकी पार्टनरशिप डेवलप हो रही है तो मैंने यही कहा कि जो नया बैट्समैन है उसको अबरार अहमद को फेस करते हुए टाइम लगेगा, वो फंसेगा। और कट किया है बिटवीन द गली फील्डर एंड द पॉइंट फील्डर, शॉर्ट पॉइंट फील्डर, और 2 रन्स बना लिए आई थिंक। 49 रन्स की पार्टनरशिप ऑफ 47 डिलीवरीज। अबरार अहमद प्यारा सा कट किया। वैसे तो ये
शॉर्ट पॉइंट फील्डर के बिल्कुल हाथों के नीचे से गुजर के चली गई, स्पीड की तेज होने की वजह से he wasn't able to catch it, and Abrar Ahmed appealing for LBW, but it was nowhere near it. It was a ridiculous appeal. बैट्समैन ने अपना फ्रंट लेग इतना आगे किया और ये बॉल भी उनके हेलमेट पे लगी है, और हेलमेट भी इतना आगे था, it wasn't even close. So two balls have been gone, 2 runs consumed in Ibrar Ahmed's over. लेग साइड पे बॉल किया, फ्लिक किया, स्क्वायर लेग फील्डर ने कलेक्ट किया और अबरार अहमद का ओवर कंटिन्यू हो रहा है। अबरार अहमद के कंटिन्यू होते होते ही, और देखते हैं, ये न्यूज़ आज चल रही थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी ज़ाहिर है शेयर करते हैं कि ऑफिशियल जो सिटी हैं PSL 11 के लिए वो फाइनलाइज हुए हैं। इन 6 के अंदर से ही 2 सिटीज़ फाइनलाइज होंगे, और ये वो कैच आउट होते होते बच गए। इन दी एयर था लेकिन बॉल स्टॉप हो गया पिच पे, इब्रार अहमद से आगे थोड़ा सा बॉल ठप्पा पड़ी। तो खैर, हम सिटीज़ की बात कर रहे थे। हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, गिलगित, मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी, इन 6 सिटीज़ में से 2 सिटीज़ होंगे जो कि PSL 11 के अंदर कंटेंशन करेंगे। और ये लेग साइड पे बॉल फाइन लेग की तरफ से गैप फाइंड किया एंड इट्स अ बाउंड्री। इब्रार अहमद लुकिंग डिसअपॉइंटेड ऑन द क्रीज, feeling like he's not aware of what's happening right now. बिल्कुल फील्डर के पास से गया, और फील्डर कौन थे यार ये भाई, मुझे लग रहा है हुसैन तलत थे शायद। अगेन लेग स्टंप से बाहर थोड़ा सा बॉल था, उसे हल्का सा फ्लिक किया और स्क्वायर लेग के फील्डर ने कलेक्ट किया। ओवर ख़त्म हुआ, अबरार अहमद का सिर्फ एक ओवर बाकी। श्रीलंका 2-1-3 for 5 और 40 overs have been passed. ये वो न्यूज़ थी जिसका मैं आपको शेयर कर रहा था। आपके ख्याल में यार कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपके ख्याल से PSL के अंदर इन 6 टीमों में से कौन सी टीम्स होंगी। मेरे हिसाब से तो जो 2 टीम्स होंगी दैट विल बी सियालकोट और फैसलाबाद। फैसलाबाद का बड़ा सिंपल सा रीज़न है, उनका ग्राउंड तैयार है और होम गेम्स भी इनको मिल जाएंगी ईजिली, तो फैसलाबाद तो इस वजह से होना चाहिए। और सियालकोट ये है कि जितनी भी डोमेस्टिक हमारी आज तक हुई है उसके अंदर सियालकोट स्टालियंस हैव बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर आउट ऑफ ऑल। तो उसकी वजह से दे वन मैनी टाइटल्स, 6-7 टाइटल्स दे वन इन द डोमेस्टिक। तो सियालकोट स्टालियंस इज गोइंग टू बी माई पिक एंड फैसलाबाद। तो नवाज Mohammad Nawaz has been brought into the attack or he has been dismissed for 4 on the very first ball. Sri Lanka is now attacking on Pakistan. 10 overs का खेल बाकी है and now they have started to take charge. Let's see how this goes. Pretty much सिंगल ले लिया, स्टॉप करके बिल्कुल ही पिच के पास से लेग साइड पे बॉल प्लेस किया और जब तक फील्डर आए तब तक एक सिंगल ले लिया। शाहीन शाह अफरीदी इस टाइम टीवी स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं, डग आउट में बैठे हुए हैं। इज़ नॉट फीलिंग वेल। रिपोर्ट्स ये हैं कि उनको कोई फ्लू था जिसकी वजह से ही wasn't able to make it into the playing 11. He's been rested ताकि he could feel well in the final ODI that could be a match or series decider. और इन दी एयर खेला गया, इन दी एयर तो नहीं था, खैर ऐसा फील हुआ कि इन दी एयर है, लेकिन बॉल डीप स्क्वायर लेग की तरफ गया। Rizwan is standing close to the stumps because Mohammad Nawaz is bowling.
दो बॉल्स हो चुके हैं, सॉरी 3 बॉल्स हो चुके हैं। पहले पे चौका, फर्स्ट पे सिंगल, दूसरे पे भी सिंगल। 6 रन ऑफ फर्स्ट 3 डिलीवरीज। लॉन्ग ऑन की तरफ बॉल प्लेस किया, डीप लॉन्ग ऑन ने कलेक्ट करके एक और सिंगल ले लिया। सो लियांगे इज द टॉप स्कोरर फॉर श्रीलंका इन दिस मैच। 49 नहीं 50 स्कोर किया है, एंड अप्रिसिएशन ऑल ओवर हिज कैंप साइड। अ वेल डिजर्व्ड 50 in a tough situation. Sri Lanka was struggling, 98 और 99 for 4 थे, 100 भी नहीं हुआ था, इनकी 4 खिलाड़ी आउट थे। And now they've made a comeback, they've made a strong statement और dismiss किया for a 6, brilliantly played। क्या कमाल शॉट थी भाई, मोहम्मद नवाज को मार पड़ रही है फॉरवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर के ऊपर। वो सिर्फ जाते हुए ही बॉल देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शॉट। कमाल कमाल बॉलिंग। छक्के पे छक्का खाओ। मोहम्मद नवाज को आज मार पड़ रही है, लेकिन इतनी मार नहीं पड़ रही जितनी हारिस रऊफ को पड़ चुकी है। लेकिन हारिस रऊफ विकेट्स तो लेके देते हैं। मोहम्मद नवाज ने आज काफ़ी डिसअपॉइंट किया इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग। और ये ओवर भी मेरा ख्याल है हमारी इनिंग्स का सबसे एक्सपेंसिव ओवर साबित होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इंडीड द मोस्ट एक्सपेंसिव ओवर। 10, 11, 12, 13, 14 रन्स का ओवर। द मोस्ट एक्सपेंसिव ओवर ऑफ श्रीलंकाज इनिंग्स बाय फार। लास्ट 5 ओवर्स के अंदर 40 रन्स बनाए हैं उन्होंने विदाउट गिविंग अ विकेट। श्रीलंका लुक्स प्रिटी कॉन्फिडेंट to make a score around 300. Abrar Ahmed has been brought and he will complete his quota. This is his last over. Let's see how this he does with the last over. और PSL की बात हो रही थी। This is the management। और कैमरामैन जो हैं वो सही शरारतें करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई स्पॉन्सर था शैम्पू का। तो पहले वो लड़की के बाल दिखाए गए और उसके बाद वो कैमरामैन शरारत करके बोल्ड शख्स को दिखा रहा है कि ये भी स्पॉन्सरशिप के अंदर आ जाता है। तो खैर ये तो चलता रहता है, कैमरामैन शरारतें करते रहते हैं। Naseem, Ubaid and Hunain, Shah brothers pace trio in action. All three brothers are featuring in pro cricket today. अच्छा ये मुझे नहीं पता था। Ubaid represented Pakistan A earlier. Hunain was in action for Islamabad in Quaid-e-Azam Trophy. और Naseem Shah is bowling for Pakistan against Sri Lanka. So here you go.
असरंगा बैटिंग करने आ गए हैं और बिल्कुल डेथ ओवर्स का सीन शुरू हो गया है। लेट्स सी कि श्रीलंका की टीम कितना अच्छा कैपिटलाइज करती है इस सिचुएशन को, बिकॉज फाउंडेशन ने तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंट सेट कर दिया है। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट अर्लियर, दिस इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग स्टार्ट। नसीम शाह, उबैद शाह, हुनैन शाह, तीनों करंटली क्रिकेट खेल रहे थे आज। एक पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, नसीम शाह ऑब्वियसली खेल रहा है। दूसरा उबैद शाह, उसका पाकिस्तान ए की तरफ से रिप्रेजेंटेशन थी अगेंस्ट ओमान राइजिंग स्टार्स एशिया कप में। एंड हुनैन वाज प्लेइंग फॉर इस्लामाबाद वर्सेस फैसलाबाद इन कायद आजम ट्रॉफी। सो दिस इज़ अ प्रिटी इंटरेस्टिंग। तो ये भी बड़ा फिनोमिनल सा एक बात है कि दैट थ्री ऑल ऑफ द थ्री ब्रदर्स आर प्लेइंग प्रोफेशनल क्रिकेट एट अ टाइम। और बाकी स्क्रीन के ऊपर अभी धुलाई का सेशन चल रहा है कि हाउ श्रीलंका की क्रिकेट टीम किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को धो रही है। और बाकी ये है कि ये कुछ इनिंग्स की पिक्चर्स हैं। ये वो फर्स्ट रन आउट है जो रिजवान की बदौलत हुआ, ड्यू टू हिज एजिलिटी, बिकॉज दैट वाज एन अननेसेसरी रन। बड़ा ज़बरदस्त किस्म से ओपनिंग स्टैंड था। एंड आई एम बाउंड टू बिलीव दैट कि जो ओपनिंग स्लॉट है श्रीलंका का, दैट इज़ प्रिटी गुड, बिकॉज पिछले मैच के अंदर भी दे स्कोर्ड, मतलब पावर प्ले में देवर लाइक 70 फॉर नो लॉस। और उनकी पिछले मैच में भी अच्छी फाउंडेशन थी और आज भी बहुत अच्छा खेल रहे थे ये दोनों बैट्समैन। और जो है, लेकिन ये हुआ कि रन आउट हुआ, अननेसेसरी रन आउट। और दूसरी तरफ से जो मोमेंटम है फिर पाकिस्तान को मिलना शुरू हुआ और फिर एक मोमेंट आया कि 98 फॉर 4 आउट हो गए। एंड देन श्रीलंका की टीम ने कैपिटलाइज किया, अच्छी पार्टनरशिप्स लगाई और 98 फॉर 4 से लेके नाउ दे आर 236 फॉर 6। और अभी भी डिसमिसल जो सिक्स विकेट है वो रिसेंटली हुई है। तो लेट्स सी हाउ दिस गोज। हारिस रऊफ ने 2 विकेटें ली हैं, अबरार अहमद ने 3 विकेटें ली हैं। अ ब्रिलियंट स्टॉप एफर्ट बाय नसीम शाह एट द बाउंड्री रोप। उन्होंने कुछ रन सेव किए। अभी ये बिल्कुल लाइव आपको हाइलाइट्स बता रहा हूँ, मोहम्मद वसीम जूनियर का ओवर चल रहा है। साथ ही साथ ब्रिलियंट एफर्ट फ्रॉम नसीम शाह टू स्टॉप द बाउंड्री और 2 रन सेव किए टीम के लिए। और बिल्कुल एंड के ओवर्स चल रहे हैं। वसीम जूनियर नीड्स टू इम्प्रेस मोर, बिकॉज 5 इकोनॉमी isn't going to be enough to impress the selectors or the people of Pakistan and cricket enthusiasts। कि अगर अपनी प्रेजेंस को, अपनी बॉलिंग को, मतलब अगर आप वसीम जूनियर की सिर्फ बॉलिंग की बात करो, ही हैज़ बीन कंसिस्टेंट विद हिज लाइन लेंथ, ही हैज़ बीन प्रिटी डिसिप्लिन्ड, बट दैट लक फैक्टर इज मिसिंग। ही नीड्स दैट लक फैक्टर, बिकॉज उनका स्लिप पे भी आज गया लेकिन कोई स्लिप पे फील्डर नहीं था और वो बाउंड्री ड्रॉप के ऊपर जाके 4 स्कोर पड़े। बॉल जो है बहुत अच्छा उनका ग्रिप हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, सीम हो रहा है। तो मोहम्मद वसीम जूनियर हैज़ द इंग्रेडिएंट्स टू बी ए गुड फास्ट बॉलर। और ही वॉज प्रेटी डिसिप्लिन। अगर आप इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन की कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन वसीम जूनियर एंड हारिस राव, तो वसीम जूनियर इज़ गुड और बेटर। और अभी एक बाउंसर करवाया, आई डोंट नो इफ द एम्पायर इज गोइंग टू गिव दैट वाइड, नो नॉट वाइड, 1 फॉर द ओवर का इशारा चल रहा है। और बात हो रही थी कंपैरिजन बिटवीन वसीम जूनियर एंड हारिस रऊफ। तो हारिस रऊफ इस तरह कंसिस्टेंट नहीं थे, बट व्हाट डज हारिस रऊफ डू जो कि वसीम जूनियर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो एज नहीं मिलता वसीम जूनियर को, दैट इज़ विकेट्स। सो इन ऑर्डर टू मेक एन इम्पैक्ट, टेक विकेट्स or you won't be remembered. Simple as that, Wasim Jr. Sorry, that's how the world works. So you need wickets, my friend, if you need to make an impact for playing the national side. So 240. Sri Lanka is looking pretty good. Naseem Shah getting tips from the boundary rope. Hasaranga taking the guard. पिछले मैच में भी हसरंगा प्लेड अ लोन वॉरियर, अकेला लड़ता रहा एंड तक।
और बिल्कुल लास्ट ओवर के अंदर जाके ही हैड टू थ्रू हिज विकेट जस्ट टू चेस दैट डाउन, और क्लोज सिंगल, a chance for a run out but missed. It's not going to be a run out. So there's that. और ये क्या है? We are grateful to Sri Lanka team for stay in Pakistan. सलमान अली आगा का ये स्टेटमेंट आया है एट द टॉस। अभी स्क्रीन के ऊपर नसीम शाह की वो फील्डिंग एफर्ट जो उन्होंने बड़ी बेहतरीन किस्म की फील्डिंग की, उसका कंपैरिजन है। वाओ, ये भी एक न्यूज़ है भाई। इमरान नज़ीर इज़ परफॉर्मिंग उम्रा विद हिज फैमिली। आई डोंट नो इफ दैट्स मेड फ्रॉम एआई, बिकॉज इमरान नज़ीर इस तरह लग रहे हैं आजकल, ये तो बिल्कुल ऐसे 19-15 साल का इमरान नज़ीर लग रहा है यार। तो खैर उम्र मुबारक हो यार इसको और इसकी फैमिली को बहुत बहुत। और ये तो हॉकी की आ गई है, और ये मेंस ओडीआई टीम की आईसीसी रैंकिंग शुरू हुई है। पाकिस्तान हैज़ क्लाइम्ड वन स्पॉट अप above the Sri Lanka, and they are now at the fourth spot. This is the major turn of events in the ODI rankings. Shaheen Shah leading right in the middle, while right hand side पे सलमान अली आगा और लेफ्ट पे बाबर आजम, एंड देन वी हैव मोहम्मद रिजवान एंड फ़खर जमान। यार बंदा इज्जत कर लेता है, साथ बिठा दो, लेकिन अब बात ये है ना, उधर से बाबर है उधर से रिजवान है, किसी एक को बिठाएंगे। लेट्स सी, बाबर को भी साइड पे नहीं कर सकते। तो खैर ये है। बाकी साइम अयूब के इंटरेस्टिंग स्टार्ट, ये तो खैर पुरानी बात है। हारिस रऊफ ने जो है, जो आज बॉल जिस बॉल पे आउट किए है, दैट स्विंग वेरी लेटली, और बहुत अच्छा बॉल था जिसके अंदर उन्होंने ऑफ स्टम्प स्टार्ट किया था। अबरार अहमद का यही बार बार मैं बात कर रहा हूँ, पिछले मैच में उसको खिलाया नहीं गया बुखार का कह के, और उसकी जगह पे जो फैसल अकरम डिज़र्विंग पर्सन था उसको भी नहीं खिलाया गया। तो दैट्स प्रिटी, मतलब। और रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर लोगों ने अपनी मोबाइल लाइट्स ऑन शुरू कर दी हैं। लेट्स सी, आई मीन, 44 overs have been gone and Sri Lanka are 241 for 7, एक और आउट हो गया है। But the bigger picture is that Hasaranga is on the crease. The very same man who almost won them the match in the previous game. That's going to be pretty exciting and absolutely crucial. चमीरा आए हैं। मधुशन ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर जो चल रहा है मैच उसमें चमीरा है। यही मैं कहूँ, अब खुद ब खुद अपडेट हो गया है।
चमीरा आए हैं बैटिंग करने. हारिस रऊफ हैज बॉल्ड अ बाउंसर. ये वाइड दिया गया है. तो लेट्स सी हाउ दिस गोज. 6 ओवर्स का गेम रिमेनिंग है. तो दो वाइड्स कराने के बाद आखिरकार एक बॉल करवाई दी. हारिस रऊफ ने 58 रन्स कंसीव किए हैं 8 ओवरों में. कैन यू इमेजिन दैट. अपील की है, आउट दे दिया है एम्पायर ने. लेट्स सी इफ दे आर गोइंग टू रिव्यू इट. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मोहम्मद वसीम जूनियर एंड हारिस रऊफ. ऑल्दो that Mohammad Wasim Jr. was more disciplined than Haris Rauf, but here is Haris Rauf conceding a humongous amount of runs, but he takes wickets. He is the one who is going to dismiss batsmen. Maybe it's his speed, maybe it's his bowling, maybe whatever the reason it is, he's effective in today's game and he will always be relevant just because he is taking wickets. Imran Khan, the great Imran Khan, the greatest cricketer of all time. Some argue he was the best in the bowling in his days and best in the batsman in his days. But he says that if any bowler takes wickets, then that is what matters. Economy doesn't matter, the averages doesn't matter. What he wants and what he used to do back in his days was tell the bowler, don't worry about consuming runs, I just need wickets from you. And this is what Haris Rauf does, and that is the reason one that he is relevant today and is getting his name in the playing 11s. So Sri Lanka is dismissing, gaining to lose that momentum. All of that work down the toilet drain. 244 for 8. At one moment there it was looking like if they could achieve around 300. Hasaranga is there and maybe they could get 20 or 30 more runs, but let's see. It all depends upon the player that is going to face the upcoming ball. So as I was saying, so Pakistan is playing good. Let's see. This is Mohammad Rizwan, who was not given the choice of being the captain today, or maybe he was given the opportunity, he declined. But I can say, for the relevant reasons, he wasn't given the opportunity because he's not
political person. So the fourth ball, it's a beat. 58 runs consumed by Haris Rauf. Is going to complete his ninth over. 3 wickets taken, leveling Abrar Ahmed. Will he be able to take the 2 wickets and take a fifer? Push towards the point fielder. Saim Ayub standing there, collecting the ball and giving a dot. Let's see how this goes on from here. Will Sri Lanka be able to score 270, 260? Inside edge, off to the boundary rope, and surprisingly, Haris Rauf is stunned that how that ball was missed from the wickets. Inside edge and off to the boundary rope. Haris Rauf looks in disbelief that how this ball missed the stumps, and he's posing like he doesn't believe it. Taking his mark back at the bowling side. He is up to fall the last ball of his over. Oh, it missed the off stump by inches. He laughs and smiles. The batsman laughs and smiles. They all know they're playing competitive cricket. Haris Rauf takes his things and ends his over. Consumed 62 runs in the 9 overs. Hasaranga is playing and Pramod is playing alongside him. That inside edge gave him 4 runs. The luck is on Sri Lanka's side right now. Fakhar Zaman looks out of form and low on confidence. Do you think he should be benched and Hasibullah included in the playing 11? Absolutely not. Why? Because I am going to tell you. थोड़ा देसी वे में भी बताता हूँ. हसीबुल्ला ने लास्ट टाइम इसको 3 मैचेस मिले थे किसी इंटरनेशनल टीम के अगेंस्ट, आई डोंट नो, और वीकर साइड थी. इट वाजंट लाइक कि न्यूजीलैंड टाइप या ऑस्ट्रेलिया टाइप के, मतलब किसी नॉर्मल टीम के खिलाफ मिले थे. एंड आई वॉच्ड हिम, हसीबुल्ला खान, ही वॉज सिंपली, वो जिस तरह लपेटा नहीं होता है, वो लपेटे दे रहा था हसीबुल्ला, आंखें बंद करके दे घुमा के. एंड आई रिमेंबर के कॉमेंटेटर्स उस टाइम कह रहे थे दैट इज एब्सोल्युटली नट्स, कि ही इज गॉन सिंपली मैड. तो दिस शोज कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक होता है, देयर इज अ फ्रेज कॉल्ड मेथड टू मैडनेस, कि मैडनेस के लिए भी एक मेथड होता है, कि आप ये नहीं होते कि मैडनेस इनटू मैडनेस, मेथड इनटू मैडनेस होता है, कि आपने अगर पागल भी होना है तो उसकी भी कोई वजह, एक कोई टाइम, एक कोई वो होता है. फॉर इंस्टेंस आपकी टीम 8 विकेट के नुकसान पे लूजिंग, आपको कोई 50 रन चाहिए 20-15 बॉलों पे, तो यू लुक लाइक कि हाँ यार अब अटैक करते हैं, अब तो बिल्कुल मैच ख़त्म होने लगा. तो उसके लिए भी ही वॉज, मतलब इन माई ओपिनियन ही डिड नॉट प्ले अप टू माई एक्सपेक्टेशंस, और ही डिड नॉट इवन showed that kind of a potential that he needs to have, that someone could say that he is an aspiring cricketer. He looked like a gully cricketer. So no disrespect to him, but Fakhar Zaman in today's game, in today's era, even by having
out of form, he's out of form. But Hasibullah Khan does not justify to replace Fakhar Zaman, in my opinion. Your opinions could differ, but in my opinion, it isn't logical to remove Fakhar Zaman instead of him. Let's see what's up on the timeline. There's a stat: Abrar Ahmed in last 3 ODIs, 26 overs, 10 wickets, economy of 3.9 below 4, an average of 10.2. That's impressive. Those bowling stats better than any Pakistani bowler in ODIs at the moment, but he keeps getting dropped casually. Those stats could have been better, but he missed 2 out of the last 4 ODIs. I am 100% convinced that you are saying what you are saying, Mirza Iqbal Beg Saab, Mirza Lal Beg Saab. ये लाल बेग इसका अपना नाम है या कॉमिक नाम है? आई डोंट नो people have the right to freedom. Maybe you could name your kid like Lal Beg, but it's hilarious. I hope it's a comic name. Her Pakistan barely plays long and regular ODI series. Better to keep him regular and prepare at least one proper bowler who can take wickets consistently and be economical as well. Otherwise, World Cup 2027 will be a repeat of World Cup 2023 bowling performances. And I completely agree to Mr. Lalbeg. लालबेग भी कहते हुए हंसी आ रही है. खैर कहने का मकसद ये कि ही इज़ ऑन पॉइंट कि यार आप स्टार्ट्स देखो. एंड आई वाज मतलब मैं अपनी पूरी लाइव स्ट्रीम पे आप देखें, एक मैंने 1.5-2 घंटे की, एक मैंने 2.5-3 घंटे की. उसके ऊपर जो मेरा बेसिक मसला था पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट के साथ था, वो इब्रार अहमद के हक़ में फ़ाइट करना ही था और उसकी आवाज़ उठाना था. और वो इन्होंने ये बात कह दी कि जी वो बीमार है, इस वजह से इब्रार अहमद नहीं खेला. लेकिन ये है कि इब्रार अहमद के बिल्कुल फिगर्स कम्प्लीटली ऑपोजिट हैं. उसकी इकॉनमी देखो, उसकी विकेट्स देखो. और फिर जनाब अभी करंटली ज़ाहिर है इसने अपना स्पेल आज का पूरा कर लिया. और let's see कि how Haris Rauf finishes off, because if Haris Rauf takes a wicket then he is going to be Abrar Ahmed is going to be shadowed by Haris Rauf. तो it wouldn't even bother people, जो हैं वो भूल ही जाएंगे. और वसीम जूनियर यार बहुत क्लास बॉलिंग कर रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता. बॉल इतना कमाल ग्रिप और रिवर्स हो रहा है ना, बॉल देख के मज़ा आ रहा है सच्ची में भाई. मतलब 254 फॉर 8 हैं इस टाइम. और मैं कहता हूँ कि इस टाइम बॉल वसीम जूनियर जिस तरह इसने बॉलिंग कराई है ना, और कमाल बॉलिंग कराई है, शुक्र ये है एक विकेट मिल गई है. फिर एक भी विकेट ना मिलती ना तो फिर बड़ा होना था. और मेरी तो ये ख्वाहिश है कि तीनों विकेटें वसीम जूनियर ले ले ताकि ओवर शेडो ना हो जाए कहीं वो हारिस रऊफ़ के हवाले से. तो बाकी अब ये पार्टनरशिप चल रही है, थोड़ी सी ये पार्टनरशिप रहेगी. ये लेट्स सी कि किस तरह से इस चीज़ को डिसमेंटल किया जाता है और किस तरह से इसको रिव्यू किया जाता है. बट मेरे हिसाब से अब जैसे अब ये स्टार्ट है, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट इन ओडीआई सिंस 2022. इसमें सलमान अली आगा का हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है 95.56. ओ माय गॉड, इट्स बेटर देन विराट कोहली. और सदीरा का स्ट्राइक रेट देखें 92, जो आउट हुए इस बार. मेरा ख्याल ये वही बॉल आउट हुए हैं हारिस रऊफ को जो ऑफ स्टंप पे बॉल स्विंग होके अंदर आया था, उसकी वही विकेट है. डैरल मिचेल है, जोए रूट. तो सलमान अली आगा इज़ वेरी मच ऑन टॉप ऑफ सम वन ऑफ द ग्रेट्स. मतलब डैरल मिचेल, जोए रूट, विराट कोहली से ऊपर होना इन ओडीआई, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक. सो कंग्रेचुलेशंस टू सलमान अली आगा. आई नो हिज एवरेज इज़ नॉट अप टू द मार्क एज कम्पेयर टू, लेकिन जोए रूट से तो बेहतर है. इट्स नॉट बेटर देन डेरल मिचेल एंड विराट कोहली, लेकिन ये है कि सदीरा और जोए रूट से तो बेहतर है. तो सलमान अली आगा को कंग्रेचुलेशंस. वाइल ये बड़ा एक मज़े की बात चल रही है कि एक बंदे ने पोस्ट किया था ऑन ट्विटर रिगार्डिंग मुल्तान सुल्तान मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी रिन्यूअल के बारे में हेजिडेंट है. और अली तरीन ने उसके रिप्लाई में बोला कि भाई हमें अपनी टीम का नहीं पता, प्लेयर्स तो दूर की बात है. तो अली तरीन इज़ फेमस फॉर हिज कॉमिक टाइमिंग और हिज ब्लंट नेचर. सो it's hilarious. Babar Azam is the biggest crowd puller.
द प्रेजेंस ऑफ बाबर आजम। अरे जुम्मे के टाइम की तस्वीर दिखा रहे हो भाई, ये इंडिया वाले हैं, ये इंडिया वाले इसी तरह ही करते हैं। ये वही स्टंप की तस्वीर है जो फर्स्ट डिसमिसल आउट हुआ, सेकंड डिसमिसल आउट हुआ, रिजवान ने किया। और ये पुरानी सलमान अली आगा सेंचुरी है। दो लेजेंड्स इन वन फ्रेम, बाबर एंड रिजवान। हाँ लेजेंड्स तो हैं भाई, दोनों हैं। और इस टाइम करंटली पाकिस्तान टीम के जो प्रॉपर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, वो यही दो हैं, बाबर और रिजवान। तो लेट्स सी कि क्या होता है। ये हांगकांग की जो सिक्सेस नहीं वो चल रही थी हांगकांग के अंदर, एशिया कप चल रहा है ओमान के साथ, वो पाकिस्तान का वो स्कोर है। तो खैर अभी हम आते हैं मैच के ऊपर, बिल्कुल 3 ओवर रह गए। लेट्स सी हाउ दिस गोज़ और किस तरह से पाकिस्तान टीम इस चीज़ को टैकल करती है। व्हाट डू यू थिंक इज़ द गुड टोटल फॉर श्रीलंका इन ऑर्डर टू विन दिस मैच? सलमान अली आगा ड्रेसिंग रूम में गए हैं, कुछ पीने शीने गए हैं, आई डोंट नो क्या पी रहे हैं, बट हो सकता है उनको कोई टिप्स दी जा रही हो रिगार्डिंग फिनिशिंग थिंग्स ऑफ। लेकिन इनका ड्रेसिंग रूम में होना बनता नहीं है यार, एज अ कप्तान आपके बिल्कुल आखिरी ओवर चल रहे हैं और आपको छोड़ के उधर चले जाओ ड्रेसिंग रूम में। सिंगल हारिस रऊफ की बिल्कुल आखिरी बॉल रह गई है। लेट्स सी ही इज इफ ही इज एबल टू टेक द फोर्थ विकेट और नॉट, बिकॉज अभी तो मुश्किल लग रहा है। सलमान अली आगा इज कमिंग बैक ऑन टू द फील्ड। आई थिंक इस बॉल के बाद वो वापस आएंगे और फिर वसीम जूनियर पे है सारा दारोमदार। आई विश कि वसीम जूनियर 2 विकेट्स लें और कंप्लीटली ओवरटेक करें हारिस रऊफ को, बिकॉज हारिस रऊफ का नाम जो है ना वो हो जाता है। हालांकि उनकी इकॉनमी इस टाइम फर्स्ट टाइम अमंग द पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप, बट आई डोंट वांट कि ऐसा हो और इट्स अ बीट बॉल। तो हारिस रऊफ का स्पेल कंप्लीटली कोटा कंप्लीट हुआ, 10 ओवर्स 3 विकेट्स। और मोहम्मद वसीम जूनियर का भी 1 ओवर रहता है। लेट्स सी, 3 ओवर्स का खेल बाकी है। हाउ मच टोटल श्रीलंका विल बी एबल टू पुट ऑन और मैनेज। ओ सॉरी, ये मोहम्मद रिजवान फील्ड से बाहर गए थे और कोई और कीपिंग, हसीबुल्ला कीपिंग करने आया था। अच्छा 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 अच्छा, मोहम्मद रिजवान फील्ड छोड़ के कुछ गए थे, क्या करने गए थे, नमाज पढ़ने गए थे या कुछ करने, जो भी करने गए थे। हसीबुल्ला कीपिंग कर रहे थे और अब मोहम्मद रिजवान वापस आ गए हैं ग्राउंड के अंदर। हसीबुल्ला खान 1 या 2 ओवर के लिए उन्होंने कीपिंग की और अब वो वापस ग्राउंड में आ गए। तो क्या करने गए थे ये कमेंटेटर ही बेहतर बता रहे होंगे, बल्कि यहाँ पे आ रहा होगा लिखा हुआ। नहीं, यहाँ कोई नहीं आ रहा। मोहम्मद रिजवान जो है क्यों छोड़ के गए थे, कमेंटेटर ही ज़्यादा बेहतर बता सकते होंगे। या नमाज पढ़ने गया होगा या तो ज़ाहिर है वॉशरूम ब्रेक पे गया होगा। बट आई हैव सीन हिम ड्रिंकिंग समथिंग इन द ड्रेसिंग रूम, मोहम्मद रिजवान। मे बी उसका कोई रोज़ा, लेकिन रोज़े का तो खैर टाइम ही बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मगरिब के टाइम खुलता है, तो खैर मगरिब से भी बहुत ऊपर टाइम हो गया। मे बी ही नीडेड अ ब्रेक, कुछ पीने वगैरह या लो एनर्जी फील कर रहा हो। तो हसरंगा इज़ फेसिंग, Naseem Shah has been brought into the attack. Haris Rauf ka quota completed. Up now Naseem Shah, Wasim Jr. will finish the things for Pakistan. Let's see how they complete it. I think अभी तक 260 का टोटल भी पड़ जाना, that's a brilliant effort, a brilliant fight from Sri Lanka की cricket team. Why? Because they were at one stage 98 for 4. Brilliant shot towards the cover side, डीप कवर के ऊपर शानदार चौका नसीम शाह को। हसरंगा इज प्लेइंग once again the crucial role for the team Sri Lanka, finishing things off in style, taking the job, taking the responsibility to give that extra few runs the team needs in order to set up a decent, reasonable total. A brilliant drive, full toss, a gift to Hasaranga by Naseem Shah. और ये बॉल गाइड कर दी है नसीम शाह की तरफ स्लोली एंड इट्स अ डॉट बॉल।
264 फॉर 8। बिल्कुल 2 बॉलों का खेल बाकी। उसके बाद नसीम शाह का एक ओवर बच जाएगा, वसीम जूनियर का एक ओवर बच जाएगा और 2 ओवर्स इसी तरह मुकम्मल हो जाएंगे। अबरार अहमद के 10 ओवर का कोटा मुकम्मल हो चुका। मोहम्मद नवाज़ का 7 ओवर्स हुए आई गेस और साइम ने 3 करवाए हैं और बाकियों के पूरे पूरे हैं हो गए हैं। लेट्स सी सेकंड लास्ट बॉल। एक मेडन ओवर भी है नसीम शाह का, तो ही इज़ इम्प्रूविंग एज अ बॉलर। आई बिलीव ही डज हैव दैट एबिलिटी टू टेक विकेट्स, बट आज शायद उस तरह से ऑफ कलर फील हो रहे हैं। और थर्ड मैन की तरफ गाइड किया और 2 रन्स मुकम्मल। सो व्हाट इज़ his last ball going to be before bowling on his last over? The second last over है, his economy is slightly below 4 की, क्योंकि ये हिंसा बड़े मैटर करते हैं बिकॉज इफ़ यू आर इन द 4 इकोनॉमी वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट कैटेगरी है, 5 वो डिफरेंट और 6 पे डिफरेंट। हारिस रऊफ बेशक रन्स खाते हैं बट ही टेक्स विकेट्स, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन टर्म्स ऑफ विनिंग अ गेम। तो विकेट्स चाहिए बाबू नसीम शाह। और बहुत अच्छा बॉल था, एक किस्म का यॉर्कर बॉल था। उन्होंने स्टॉप करके गाइड किया टुवर्ड्स द पॉइंट फील्डर, बट 1 रन कंप्लीट कर लिया श्रीलंकन बैट्समैन ने। सो हसरंका विल टेक स्ट्राइक। 2 ओवर्स टू गो। वसीम जूनियर का एक ओवर रहता है और नसीम शाह का ओवर रहता है। लेट्स सी हाउ पाकिस्तान प्लेज दिस ऑफ। तो जी हसरंगा खेल रहे हैं, 2 रन्स बना लिए हैं फर्स्ट बॉल के ऊपर और ये मेरा ख्याल रन आउट का या रनिंग बिटवीन द विकेट्स का कोई मामला है। ही वाज मे बी नो, ही ग्राउंडेड हिज बैट। ही ग्राउंडेड हिज बैट्स। 2 रन्स मुकम्मल किए हसरंगा ने। वसीम जूनियर बहुत कमाल बॉल, लेंथ बॉल थी और गाइड किया उसने पीछे हट के टुवर्ड्स द थर्ड मैन फील्डर। और नसीम शाह खड़े थे वहाँ पे, उन्होंने बॉल कलेक्ट करके थ्रो किया। आई थिंक इट्स अ सिंगल। जी बिल्कुल इट्स अ सिंगल। 270 रन्स अचीव कर लिए श्रीलंका ने। दैट इज़ रियली रियली गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम द श्रीलंकन साइड because at one time they were struggling to score good, but now they are playing good cricket all along. A bouncer, slow ball bouncer, missed, बल्कि लेफ्ट कहना चाहिए। हसरंगा नहीं, सॉरी सॉरी, प्रमोद ने लेफ्ट किया इसको।
He played 11 deliveries and scored 7 runs. Inside edge पे चौका जो हारिस रऊफ की तरफ से लगा उनको की बॉल पे लगा. And Rawalpindi Cricket Stadium is well lit. Crowd is filled in the stadium. एंड वो लोग जो कह रहे थे कि जी क्राउड एम्प्टी है, क्राउड एम्प्टी है, जाके प्लीज़ देखें. अभी हाफ इनिंग्स हुई है कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम एम्प्टी है या फुल है, आपको पता चल जाएगा. और अगर नहीं पता चल रहा तो प्लीज़ स्पेक्टिकल्स किसी डॉक्टर के साथ जाके देखें कि आपकी नज़र कितनी कमज़ोर है. बाकी जो है सलमान अली आगा इज स्टैंडिंग विद वसीम जूनियर गाइडिंग अलॉन्ग. 2 डॉट बॉल्स हो चुकी हैं इस स्टेज ऑफ द गेम के ऊपर. इट्स प्रिटी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान और फिल बिलखसूस वसीम जूनियर. ओ माय गॉड, इट्स अ बाउंसर, लेकिन बेहतरीन बाउंसर. और 1 फॉर दी ओवर का इशारा एम्पायर ने दे दिया है. द बॉलर्स मुझसे मुराद जो बैट्समैन है श्रीलंका का, ही इज़ अ बॉलर प्रमोद जो है, तो ही लुक्ड सरप्राइज्ड कि व्हाट हैज़ हैपेंड हियर. he could not understand the ball, and Wasim Jr. is bowling gundozers here, bamboozling the opposition with the rockets he's bowling right now. 3 runs given in the second last over. Brilliant Wasim Jr. और full toss, magical delivery Yorker, कमाल यॉर्कर यार. बहुत ही मतलब जो इस टाइम अनसंग हीरोज होंगे ना इस मैच के, वो वसीम जूनियर होगा. क्यों? क्योंकि ही यार उसकी बॉलिंग कंप्लीटली ना वो हाइलाइट्स में आपको दिखेगी. ये जिन जिन लोगों ने मैच देखा है ना, ये सिर्फ वही आपको बता सकते हैं किस तरह से बॉल उसका ग्रिप हुआ, सीम हुआ, डिसिप्लिन के साथ उसने बॉलिंग की. 1 विकेट ली, 50 रन दिए 10 ओवर्स के अंदर, लेकिन क्या डिसिप्लिन था. एवर ओवर शेडो कर देगा, नज़र ही नहीं आएगा. आई कैन से 110% you won't be able to see the contributions of मोहम्मद वसीम जूनियर in this match. जो उस लड़के ने आज बॉलिंग की है यार, बहुत कमाल बॉलिंग की है. ओवर शेडो कर जाएगा. हारिस रऊफ ने 3 विकेट्स लिए हैं. उसकी इकॉनमी और इसकी विकेट्स जो हैं वो सबको नज़र आएंगी, लेकिन वसीम जूनियर की बॉलिंग ना हाइलाइट्स में दिखेगी. ये जिन्होंने लाइव मैच देखा है सिर्फ उनको पता होगा वसीम जूनियर ने कैसी बॉलिंग कराई है. कमाल. 270 फॉर 8, सेकेंड लास्ट ओवर के अंदर 3 रन देना, दैट इटसेल्फ इज़ अ वन ऑफ द बिगेस्ट डील. आखिरी 2 रन के अंदर टीमें 40-45 रन मार देती हैं और उस ओवर में 3 रन देना, इट्स जस्ट लाइक जैसे नसीम शाह ने पिछले मैच के अंदर सेकेंड लास्ट ओवर कराया था ब्रिलियंटली. और ये बिल्कुल वाइड स्लो बॉल, और इट्स अ वाइड नसीम शाह. आखिरी ओवर है नसीम शाह का. ऑफुल स्टार्ट्स विद अ वाइड. फर्स्ट बॉल और डिस्पैच कर दिया है हाई इन द एयर. हु इज गोइंग टू टेक इट एंड ड्रॉप्ड. Barber drops a sitter. Oh my god. Out of all the difficult catches he has taken in the previous years, in the previous matches, this was the lollipop catch. I was trying to pronounce lollipoppiest of them all. Lollipoppiest of them all, and I could not pronounce the word lollipoppiest. ओहो, इतना लॉलीपॉप कैच छोड़ा है बाबर आजम ने कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं यार, क्या बताऊं. नसीम शाह की विकेट की अपॉर्चुनिटी गई. विल ही बी एबल टू टेक 2 विकेट्स एंड डिसमिस श्रीलंका. थर्ड मैन की तरफ फेंका गया बॉल, डबल की तरफ इशारा, एंड रिजवान ने डिसमेंटल कर दिए. स्टंप्स करने ही थे बिकॉज
in at this stage of the game, Sanat Jayasuriya is clapping right now. He's feeling the heat. Okay, who is going to be, और बिल्कुल उन्होंने आपस में भागे हैं स्टंप्स के बिटवीन, कोशिश की है कि किसी तरीके से 2 रन्स हों, और वो 2 रन्स के साथ ही वो हार भागे हैं। कमाल की बॉलिंग, कमाल की बैटिंग, और नसीम शाह की जो है ना, वो बेचारे को मिलेगा ही नहीं, विकेट ही नहीं मिलेगी। तो जी 3 बॉलें रह गई हैं, होप कि नसीम शाह गेट्स हिज विकेट, लेकिन मुश्किल लग रहा है यहाँ। और ये चौका पड़ गया, एज, नो वन वॉज देयर टू कैच द बॉल, luck on Sri Lanka's side, as there is a phrase, fortune favors the brave। और मैं कहता हूँ इतना प्यारा यॉर्कर, और बाबर आजम की एक शॉट होती थी कि वो यॉर्कर को गाइड करते थे टूवर्ड्स फर्स्ट स्लिप, बिल्कुल लेट गाइड करते थे। इफ़ यू रिमेंबर दैट शॉट यू वुड नो, वही शॉट थी, बिल्कुल ऑफ स्टंप के ऊपर यॉर्कर बॉल आया, और इतना प्यारा बॉल था नसीम शाह का कि मैं आपको क्या बताऊं। और इस बॉल के ऊपर मेरे हिसाब से चौका हो ही नहीं सकता था। अगर आप मुझसे पूछते कि यहाँ पिच बॉल करेगा और चौका पॉसिबल है, तो मैं कहता नहीं होगा। और एक और शॉट, ओए ओए ओए, एक्सेप्शनल बैटिंग फ्रॉम हसरंगा। पहली जो थी वो यॉर्कर बॉल थी, जिसको गाइड किया टूवर्ड्स फर्स्ट स्लिप, बिल्कुल एज करके, और दूसरी बॉल स्लो बाउंसर बॉल थी, इसको भी गाइड किया टूवर्ड्स फर्स्ट स्लिप, लेकिन इसको टाइम किया जिस तरह से स्कूप मारा जाता है, लेकिन स्कूप तो मारते हैं फाइन लेग की तरफ, इन्होंने थर्ड मैन रीजन की तरफ ही उसे स्लाइड सा किया, बिल्कुल अपलिफ्ट किया बैट को, दरमियान पे बॉल लगी। रिजवान इज लुकिंग इन डिसबिलीव दैट हाउ वेल हसरंगा इज बैटिंग, and Hasaranga has been selected as the platinum player in many PSLs, but unfortunately for many seasons he wasn't able to make it। But today's day as Hasaranga, oh my god, गाइड किया थर्ड मैन की तरफ, 2 रन्स लेंगे नहीं, 1 रन। Mohammad Rizwan is smiling that Hasaranga could not do anything right now with a single, the last ball, Pramod is going to face the last ball। बहुत प्यारी टाइम की बॉल यार, हसरंगा ने पहली भी बॉल इतनी ज़बरदस्त टाइम की जिसके ऊपर चौका लगा, दैट वाज ए एब्सोल्यूट किलर ऑफ अ यॉर्कर। के यॉर्कर बॉल थी ऑफ स्टंप के बाहर, उसको बिल्कुल हल्का सा टच करके गाइड किया टूवर्ड्स द फर्स्ट स्लिप, रिड़ता रिड़ता बॉल गया और चौका हो गया। और अब सेकंड बॉल भी लेंथ बॉल टाइप बॉल था, और उसको अपलिफ्ट किया थोड़ा सा, और थर्ड मैन रीजन के ऊपर से बॉल गया, फुल टॉस बॉल फ्रॉम नसीम शाह। इट्स गोइंग टू बी अ 4, it's going to be a 4, and that is the unfortunate events। Sanat Jayasuriya is clapping for his team, well done, 288, Pakistan needs 289 to win the second ODI, and brilliantly played। भाई भाई क्या फाइट की है, क्या फाइट की है, ज़बरदस्त किस्म की फ़ाइट की है पाकिस्तान, क्या श्रीलंका ने, एंड दे शुड गेट ऑल द प्रेज दे नीड। मतलब बेहतरीन। हारिस रऊफ was spotted speaking with Sri Lanka head coach Sana Jasuria on the boundary ropes in the second ODI। तो हारिस रऊफ इज़ मीटिंग हिज, मतलब चाइल्डहुड हीरो कह लें, क्योंकि जाहिर सी बात है जो मेरे ज़माने के मतलब लोग हैं जितने भी, दे वुड डेफिनेटली वुड लाइक टू मीट दैट लेजेंड, क्योंकि सना जसूरिया यूज टू प्ले दैट काइंड ऑफ अ क्रिकेट बैक इन द डेज, जो कि आज खेली जाती है। जो मॉडर्न डे क्रिकेट का नाम हम आज सुनते हैं, वो सना जसूरिया खेला करते थे। और बहुत ज़बरदस्त, मतलब जसूरिया के आने से जिस तरह से मुझे पॉजिटिव चेंज लग रहा है टीम के अंदर, आई डोंट थिंक सो कि
ऐसा चेंज मैंने देखा हो। और एक और चेंज जो बात हो रही थी, या जिस पे बात मैंने अभी इस वीडियो के अंदर तो बहुत दफ़ा की है, दैट वाज के जिस तरह से क्राउड आया भाई, क्राउड ने श्रीलंका की जिस तरह से सपोर्ट दिखाई है, आई कैन नॉट टेल यू द अमाउंट ऑफ सपोर्ट दे आर गेटिंग। और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सेटअप था भाई, मैं आपको क्या बताऊं। अब आप ये देखें ना कि श्रीलंका के सपोर्टर्स, पाकिस्तानी टीम किस तरह से, पाकिस्तानी क्राउड किस तरह से श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा है, एज अ साइन ऑफ बीइंग ग्रेटफुल फॉर देम टू विजिट आवर कंट्री एट दिस मोमेंट ऑफ क्राइसिस। लेकिन ये है कि अब शाहीन शाह अफरीदी के ना होने से एक टेल एंड पे कितना असर पड़ता है नहीं पड़ता, दैट इज़ गोइंग टू बी द अल्टीमेट। केप्ट लो, चमीरा जो है रैप्स ऑन द नी एंड इमीडिएटली गॉट आउट। और ये है पाकिस्तान टीम की सिचुएशन और इनके फेसेस। लेकिन फेसेस की बात की जाए, अभी ये लाफिंग कर रहे हैं, लेकिन जब ये बैटिंग के ऊपर इन्हें 289 रन्स का स्कोर चेज करना है ना, इनकी लाफिंग असल तब निकलेगी। क्योंकि बाबर आजम को नज़र आ रहा है ये चीज़ कि भाई ये जो लाफिंग है ना, असल लाफिंग इनकी ऐसी तैसी हो जानी है। 289 रन्स एट दिस स्टेज ऑफ द गेम इज़ नॉट दैट गोइंग टू बी ईजी। और अभी इनकी बतीसी जितनी निकल रही है, ये सारी बतीसी इनकी बाहर हो जानी है जब अब इन्हें, क्योंकि इस टाइम इन्हें पता नहीं था ना भाई इतना स्कोर पड़ जाना है आपको। और ये कल के सीन्स हैं, कल के सीन्स अगर आप लोगों से मिस हुए हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कल के सीन्स के अंदर ये था कि ये जब श्रीलंका की क्रिकेट टीम ने एग्री किया कि यार हम आएंगे और खेलेंगे, तो उस टाइम जब टूर ऑफ नहीं हुआ, तो जितने भी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स थे, शाहीन ये वो, होटल में वॉल वार्म वेलकम हुआ थ्रू आउट पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। और जहाँ तक ये स्टार्ट किया है, एंग्री बाबर, रैटिक नसीम एंड ब्रिक बो, हारिस रऊफ, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एमसीजी, ये तो खैर पुरानी बात है, इसका इस मैच से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा ये वो मैं समझ गया, दिस दीज आर द सीन्स, मतलब ये डेजा वू है हम सब के लिए। डेजा वू का जो टर्म है, अगर आप लोगों को नहीं पता वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। डेजा वू इज़ अ टर्म यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर दैट काइंड ऑफ, मतलब उसमें होता है कि जो चीज़ गुजरी हुई हो ना, मतलब बिल्कुल सिमिलर चीज़, जिस तरह आप कहते हैं यार यार ये तो मैंने चीज़ ख्वाब में देखी थी, तो ये रियलिटी कैसे हो रही है। तो ये डेजा वू वाला सीन इस तरह था, तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की क्वालिफिकेशन वाला मैच था एक, जिसके अंदर से एम्पायर्स कॉल थी और उन्होंने नॉट आउट दिया था, और अगर वो आउट दे देता तो हम एक किस्म का क्वालिफाई कर जाते। तो ये वो डेजा वू वाला सीन था जिसकी वजह से ये सारे लोग हंस रहे थे। तो अमेजिंग। लेकिन ये है कि श्रीलंका ने यार जिस तरह से फाइट बैक की है, लियांगेग ने भी बहुत ज़बरदस्त यार इनिंग्स खेली है। तुम ये देखो 85 का स्ट्राइक रेट है, 2 चौके 1 छक्का, सिंगल डबल। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज टॉक अबाउट, द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग सिंगल्स इन द वाइट बॉल क्रिकेट। दे आर एब्सोल्युटली क्रूशल इन टर्म्स ऑफ विनिंग द गेम्स। बेशक कैच आसानी से लिया, लेकिन यार ये जो सिंगल डबल होते हैं ना, इनकी गेम आपको माननी पड़ेगी। पीएसएल की अपडेट्स मैं बार बार शेयर कर चुका हूँ कि पीएसएल की वैल्यूएशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है रिगार्डिंग द सिटीज़ नेम। 6 सिटीज़ हैं, उनमें से 2 जो है वो कंटेंट करेंगे, मतलब जीतेंगे फॉर द टाइटल इन द PSL 11 एज अ टीम। और मेरे हिसाब से तो इन 2 में सियालकोट और फैसलाबाद की टीम होगी। आपके ख्याल से कौन सी टीम होगी जो PSL 11 के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट, मतलब पाकिस्तान सुपर लीग में रिप्रेजेंट करेगी, 2 नई टीम्स, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। एज पर PCT प्रैक्टिस सेशन 2 बेंच प्लेयर्स लाइकली टू प्ले सेकेंड ODI। इसमें 2 प्लेयर्स का नाम फैसल अकरम और हसीबुल्ला है, लेकिन हसीबुल्ला टेम्परेरी कीपिंग करने आए थे उसके लिए, मोहम्मद रिजवान के लिए, लेकिन चले गए। लेकिन प्लेइंग 11 के अंदर ज़ाहिर है ये दोनों नहीं है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी बेंच कर गए, उसकी जगह वसीम जूनियर, और वसीम जूनियर और इबरार अहमद ने आके वहीं अशरफ को रिप्लेस किया। ये देखें बॉलिंग लाइनअप उस टाइम पे, अबरार अहमद के फिगर्स देखें आप, मतलब उस टाइम 7 ओवर्स के अंदर इसने 3 विकेट्स ली, ये बिल्कुल स्पेल ख़त्म होने से पहले की इसकी वो है बैटिंग, सॉरी बॉलिंग। बाकी ये है बेंच पे इस टाइम फ़हीम अशरफ बैठे हैं, शाहीन बैठा है, हसीबुल्ला और फैसल अकरम है। तो आई वांटेड टू नो कि क्या था कि इनको वो नहीं दिया गया।